Hello, hello, one, two, three. Hi, it's not even 9. I am early today. पहला live है बोलकर I am quite early. Oh, we already have a question. Hello, Satpal Singh ji. Hello. I'll answer once we have a little bit, like once it's 9 and when we have a little few more people. Hi, Ehtisham. Hello. Please hang on. What is the source of your humor? Please, one by one. I'm still waiting for a few people to join in. Thank you so much, all of you, for coming. I did not expect it to be so quick. Anyway, what was I looking for? Okay. Okay, you will see that I'm in a lot of places at the same time. मैं बहुत distracted रहती हूँ और बहुत उसको बोलते हैं ना ADHD एक चीज होती है ADHD attention deficit hyperactivity disorder. I am a very hyperactive person और बहुत इधर-उधर मेरा रहता है. तो okay, wait, hang on आप लोग. Okay. So thank you everybody for coming in here. First of all, first and foremost, I hit 25K a week ago actually, and that's the time when I जब मैंने promise किया था कि मैं एक live हम एक live करेंगे यहाँ पर because मैंने कभी YouTube पे live किया नहीं है और Instagram पे भी बहुत कम ही lives है. शुरू के समय में मैंने बहुत Instagram पे live किया था. उसके बाद मैंने एक सेकंड ना ये टीवी को मैं जरा उल्टा कर लेती हूँ. Uh, okay, one second. Okay, one second. I have no idea how to flip the ये क्योंकि मिरर होना मुझे मिरर चाहिए. Oh God. Anyway, I don't think I can figure it out because again, this is the first time I'm doing this on YouTube, and I do not know how certain things I don't know. For example, settings कैसे change करना है, कैसे mirror करना है. I don't know. I'll figure it out later on. So मुझे बहुत distracting लगता है. Anyway, तो मैंने शुरू किया था. Like I said, I started this when I hit 25. Now we are almost close to 32, and I have members joining me. I have there are membership levels on my channel. You might have seen that is something which the YouTube provide करता है जब आपका एक certain level of subscription हो जाता है. तो I would like to thank all the members who have joined me. Arvind Chauhan, who joined me almost five months ago. BK Chaudhary, and this is a part of the membership tiers, etc. Like जो भी है perks and perks. तो उसमें I have to give shout outs, and I really I like doing it also. मुझे अच्छा लगता है. So Arvind Chauhan, BK Chaudhary ji, Manu Roma 71, Sushil Mohan, K Naveed 12, अक्षय कुमार, सुमित अरोड़ा, मेघनर्ड जिसके साथ मैंने कुछ दिनों पहले एक लाइव किया था and who in fact was the one who inspired me to do this live today. So Megnerd, Cringe, Appu almost comments on every single one of my videos and he gives me 3 hearts. Thank you very much. Appu, he or her gives me 3 hearts. Thank you so much. Abdul Salam, Omkar Solanki, Ramji, Samarjeet, JP, Gufran Ahmed, Sunil Caleb, Vijay Machale. I'm very sorry if I'm not pronouncing your names correctly. Deokant Pandey, Anand Baiga, MA Vakil. MA Vakil is has subscribed to the highest level, is the highest level of membership. So मेरे channel के 3 membership है BA, MA और PhD because somebody asked me what is my qualification तो उसमें मैं बताऊंगी. So BA, MA and PhD because the channel started initially as the neighborhood teacher. And MA Vakil is the highest level of subscription, has the highest level of subscription. He's the only one who is at a PhD level in my members right now. But thank you very much, Vakil ji. Pradeep Anchan, Dhananjay, Vijay, Space Design Group, Diva, and Gore. All of you have joined me. Thank you so much. I don't know why you have decided to give me money. मेरे को नहीं पता. But you guys are awesome. You guys are wonderful, especially those of you who comment on my, like I can see some of the comments coming in, and I know I recognize your names. I recognize your handles from that. So thank you very much. Now let's start the Ask Me Anything, because this is you can ask me questions about myself. I will not be revealing my name because यार समय ऐसा है
कि नाम हम बता नहीं सकते। अगर नाम बता सकते तो डॉक्टर मेडुसा नहीं रखा जाता ना। हुँ? So, Satpal Singh ji has asked me, what is your qualification? I have a PhD. I received my PhD last year. No, this is 24, right? 22 actually. I received my PhD in 22. In the year 2022, I did my PhD from Jawaharlal Nehru University. That's it. So I have two MAs, a master's in international relations, the same international relations that Rahul Gandhi has a degree from, but not the same institution though. I was in JNU. And then I also have a master's in linguistics and I have a PhD in linguistics. Yes. So, Ehtisham says, hello, Mudassar Hussain. What is the source of your humor? Everyday world, everyday happenings, which is everyday things which are happening around. In fact, मेरा humor जब शुरू हुआ था, शुरुआत मेरे humor की बहुत ही गुस्से वाली जगह से हुई थी. I was very angry at whatever was happening around the world. And मेरा जो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी ना, because जैसा कि सब लोग जानते हैं, हर कोई और सम अभी समय ऐसा है, सरकार ऐसी है कि आप कुछ भी कहोगे, कुछ भी everything is scrutinized. You are punished for a lot of things. You are punished for very small things actually. तो वो सारी चीजें जब होती है ना तो मुश्किल हो जाता है. तो because of that reason मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगी बट एक ऐसी तरह तरीके से बनाना था जिसमें अम, आप पर कम से कम क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन भी एक चीज़ होती है ना, अपने आप को बचा के भी चलना होता है। जैसे मेरी मम्मी कहती है कि तुम करो जो करना है, लेकिन अपने आप को बचा के चलो टाइप से। तो ये सब भी करना होता है। तो इसीलिए शुरुआत मैंने वैसे करी थी और क्योंकि भाषा में मेरी मतलब थोड़ी बहुत दक्षता है और अब अंग्रेज़ी की मैं टीचर भी रही हूँ, अंग्रेज़ी मैंने पढ़ाई भी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अंग्रेज़ी के थ्रू ही क्यों ना पॉलिटिकल चीज़ों को उठाया जाए, पॉलिटिकल बातों को किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, एपॉलिटिकल होना कोई ऑप्शन है नहीं। एपॉलिटिकल होने का साफ-साफ मतलब होता है आप हुक्मरान जो हैं या आप अथॉरिटी जो है उन्हीं के साथ हैं। आप इफ यू आर एपॉलिटिकल, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कई सारी ऐसी कहावतें हैं कि जो लोग जो बुरा करते हैं उनको नहीं याद रखा जाएगा, जो बुरा देखकर भी चुप रहे उनको ज़्यादा याद रखा जाएगा। So yeah, those things are there. Pukhraj says hi. Hi, Pukhraj. So again, to answer Mudassar's question, the source of my humor is anger, and the source of my humor is anger at everything which is happening around us. Junaid says hi, Satpal Singh ji. Ha, sure. I hope you got your answer, Satpal Singh ji. Gautam Singh ji, namaste, madam. Hi, thank you for all you do. It's my pleasure. It's my honor to be able to, do anything that gives you even a little bit of entertainment, a little bit of respite from whatever is happening around us. Namaste, teacher ji. Shivaji, namaste. Do we have any question? Where are you from? I am from Ballab Jyoti Roy. Ballab Jyoti Roy asks, where are you from? I am from Assam. My mother language is Assamese, but I also speak Bangla, I speak Hindi, I speak English, I speak Nepali, I speak a little bit of Spanish, and I understand many more number of languages. I understand Bhojpuri, and I understand Punjabi, and maybe a little bit of Gujarati and Marathi as well, because they're all Indo-Aryan languages, and Indo-Aryan languages are, very mutually intelligible. So that ways. Arun, if become prime minister, what is the first job for the betterment of India? If I be इससे मुझे एक ना रील याद आ रहा है। अरुण आस्क्स कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे करके कुछ है। If you become prime minister, what is the first job for the betterment of India? Hmm. Um, it's a quite a loaded question और इस तरीके से मतलब आप अचानक से ऐसे सोचते नहीं हो but I think I think one of the first things that I would do is reservations across the board, private and public, um, for uh, the minority communities, for the deprived communities, for all um, जिनको ज़रूरत है, ठीक है? तो because again, this reservation is something which I very deeply feel for because क्योंकि ये मैं एक चीज़ बता दूँ because there was once a time when I was very, very anti-reservation and I was very, very, merit.
चिल्लाती रहती कि नहीं हार्ड वर्क होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए. It was only when I came to JNU and only when I understood and only when I saw people who had so much of talent and so much of yeah, but so much of knowledge, but because of the lack of opportunity, they had not been able to. Stories of people who were not able to utilize this, and then you understand, आप nuances को understand करते हो ना धीरे धीरे. आपको लगता है कि हार्ड वर्क करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ आपको मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता. द वर्ल्ड इज नॉट फेयर. सो representation is something which I feel very deeply about. Representation for the LGBTQIA plus communities, marriage equality for all, and yeah, these will be some of the things which I will do. Yes. Restoration of the RGNF fellowships, the Maulana Azad fellowships to students, dedicating a huge chunk of the budget for education sector, healthcare sector, and and sponsoring projects and sponsoring science and technology. ओह माय गॉड! अभी तो इतना सारा दिमाग दिमाग में आ रहा है कि जैसे मैं खुद कर ही रही हूँ. गुड क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच, अरुण. So yeah, that those will be a few of the first things which I will do when I get when I if I become PM, not when. If I become PM. And if any of the Sanghis are left, I will probably be putting them in jail. Yeah. हेलो, लव फ्रॉम पंजाब. थैंक यू, जस्ट लव यू. थैंक यू. मैम, ईवीएम के लिए क्या कर सकते हैं? पता नहीं यार, ईवीएम के लिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है पता है? इट्स अ ह्यूज आंदोलन व्हिच इज गोइंग ऑन. इट्स इन फैक्ट लाइक प्रोबेबली लार्जर देन द अन्ना आंदोलन व्हिच had happened. बट नोबडी इज कवरिंग इट, नोबडी इज इवन लुकिंग एट इट. और मुझे पता है, मैं ईवीएम्स को लेके इतना ज्यादा दुखी हूँ या इतना ज्यादा सिनिकल हूँ ना, होपलेस टाइप से हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जैसे the election commission is in the government's hands now. They literally made changes in the law in order to ensure that the election commissioner will be appointed by the government, will be the government's person. तो इतना ज्यादा इन लोगों ने ऑलरेडी मतलब चेंजेस करके बात को बिगाड़ दिया है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर करते भी हम किसी तरह का आंदोलन, तो कितना फायदेमंद होगा या कितना कितना ये सक्सेसफुल होगा. बट लाइक अगेन, लाइक रवीश जी सेज कि कुछ लड़ाइयाँ फायदे नुकसान को देखने के लिए या कुछ लड़ाइयाँ उसके लिए नहीं की जाती है कि जीतेंगे हारेंगे, बट इसलिए की लड़ाई हुई थी. तो हो सकता है कुछ किया जाए, बट आई डोंट नो यार, बिकॉज़ इवन वेरी क्लियर लाइक एनीबॉडी विद एन आउंस ऑफ देयर ब्रेन, एनीबॉडी विद इवन अ लिटिल बिट ऑफ क्या कहते हैं उसको, नॉट इवन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लाइक ए लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च करने का भी अगर आपको आइडिया है कि कैसे रिसर्च करते हैं, तो उसको अगर जाके आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, यू विल फाइंड लाइक सो मेनी रीजंस व्हाई गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एंड वी आर प्रोबेबली वन ऑफ द like very few countries which are using it. So again, like I don't understand. लाइक आई डू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर सकते हो इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस को, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स के चंक को आप कंट्रोल कर सकते हो. तो ऑब्वियसली आप तो चाहोगे ना कि ईवीएम रहे. आप क्यों चाहोगे? आप सत्ता में हो या ना हो. अगर सत्ता में नहीं भी हो आप, तब भी आप चाहोगे कि रहे, क्योंकि कभी अगर आपके पास रिसोर्सेज आए, अगर आपके पास कैपेसिटी हो, तो आप मैनिपुलेट कर सको. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स all of these things are there. So again, okay. Shamal Sarkar, hello doctor. MAG, will you marry me, ma'am? I am married. I have been married for the past 7 years now. So आपकी गाड़ी निकल चुकी है. आप अनफॉर्चुनेट सॉरी, हमारी गाड़ी निकल चुकी है, आप मिस कर चुके हैं. Anyway, thank you very much. I understand it is in jest, in humor. But thank you for your appreciation. I hope you continue to watch my videos though. Yeah. कैसे हो आप? I like your videos. It's really great satire. Thank you very much. Thank you. शुरुआत सोचा नहीं था कि satire टाइप से ही करूँगी. वो तो गुस्से में तानेबाज़ी ही निकलती है ना. ताना ही निकलता है. तो ताना ही निकाला था, तो वो satire बन गया. और फिर उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को, मतलब जब आप पढ़ने लगते हो ना धीरे-धीरे चीज़ों को, लिटरेचर साहित्य पढ़ने लगते हो, तब आपको समझ में आता है कि व्यंग्य क्या है, satire क्या है, लिखा कैसे जाता है, so on and so forth. मैडम नमस्ते, गुड नाइट मैम, आप सच्चे इंसान हैं. थैंक यू. The real G, Medusa. Thank you very much. I understand what is G though. Why are you not
गेट टायर्ड कोई टॉनिक वॉनिक लेते हो क्या? कीप फाइटिंग। कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं? नहीं, कोई टॉनिक नहीं लेते। जो ज़हर फैला हुआ है ना वातावरण में, उतना ही काफ़ी है टॉनिक के लिए। वही टॉनिक का काम करता है, जो दिखते हैं आस-पास के लोगों को, बचपन के दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़हरीले बनते हुए, ऐसी बकवास बातें कहते हुए दूसरों के बारे में, ऐसे दोस्तों के बारे में जो उनके सालों-सालों से दोस्त रहे हैं, दिनों-दिनों से मतलब बचपन के दोस्त रहे हैं, उनके बारे में बुरी-बुरी बातें कहते हैं जस्ट बिकॉज़ दे हैपन टू बी ऑफ अ डिफरेंट रिलिजन और जस्ट बिकॉज़ दे हैपन टू हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट। तो ये टर्निंग बन जाता है। प्लीज़ थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, वी नीड लीडरशिप लाइक यू। हाँ, बड़ा कौन देगा मेरे को टिकट? उसके क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना यूट्यूब या के सब्सक्राइबर्स या ट्विटर के क्या कहते हैं ट्विटर के फॉलोअर्स वोट पे ट्रांसलेट नहीं होते। हाँ, हाँ, और ये यू आर अ ट्रू जर्नलिस्ट। आई वुड हैव लव्ड टू बिकॉज़ बी अ जर्नलिस्ट। मैं बचपन में सोचती थी कि मैं जर्नलिस्ट बनूँगी, बट अनफॉर्च्यूनेटली आई एम नॉट रियली अ जर्नलिस्ट। आई एम अ टीचर। मैं पढ़ाती हूँ। Um, but journalism is a beautiful profession. It's unfortunately dead in this country right now, but some people are still trying to keep it alive. I don't know if you guys see this channel called DB Live or not. Yeah, YouTube pe hi hai DB Live. DB Live is wonderful. Some of their debates I learned from those debates. And then of course we have Ravish and Ajit Anjum and Abhishar and all these people. Pragya Di, not Di, Pragya Mishra. Pragya मेरी दोस्त है उसको प्रज्ञा दी बोलती है. वो तो मुझसे छोटी ही होगी but she's a phenomenal journalist. I love what Pragya does. Um, I left liberal mindset when I see people supporting terrorists. When have I supported terrorists? Or if this is comment meant for me, I don't really know why you said this. It's not really a question, but again, I don't really know how to answer this. It's just a sentence, and it's talking about you. It's this is my life. I talk about me. एनीवे गाइस इफ यू अगर आप लोगों ने कभी मेरा इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग हो ना अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको अगर मतलब लगेगा कि ना कि ये बहुत हम्बल है ये है वो ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक है मेरे को ना इस तरीके के कमेंट्स भी अच्छे नहीं लगते और मुझे ना खुद से बहुत प्यार है और मैं खुद को सोचती हूँ कि मतलब अगर मेरी मेरी जो सोच है या फिर जो मैं सोच रखती हूँ मेरे माँ-बाप के दिए हुए संस्कार टीचर्स के दिए हुए संस्कार जो मेरे इंस्टीट्यूशंस ने मुझे सिखाया है, मुझे लगता है कि मैं राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में खड़ी हूँ, करेक्ट साइड ऑफ हिस्ट्री में खड़ी हूँ। और इस थॉट को चेंज करने के लिए, इस बिलीफ को चेंज करने के लिए मुझे एविडेंस चाहिए कि मैं गलत हूँ, ये मुझे मुझे आप एविडेंस के साथ बताओ। आप गाली-गलौज करके बताओगे या क्या कहते हैं उसको? हाँ, बेसिकली गाली-गलौज या शर्म या मुझे तंज करने की कोशिश करोगे, फ़र्क नहीं पड़ता मतलब इट्स लाइक हुँ, डज़न्ट डज़न्ट रियली वर्क। 15 साल दिल्ली में बिताए यार, इस शक्ल के साथ, इस नाक के साथ रोज़ चलते-फिरते तंज सुनने की, ताना मारने की, सुनने की, रेसिस्ट चीज़ें सुनने की इतनी आदत है कि अब कुछ लगता नहीं है। इसीलिए एविडेंस के साथ आओगे ना तब समझ में आएगा। एविडेंस के साथ आओगे तब मैं सोचूँगी भी 1 सेकंड के लिए कि हाँ, शायद मैं गलत थी। लेकिन जब तक नहीं है एविडेंस तब तक आई थिंक बिकॉज़ आई डू रीड मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आई ट्राई टू कीप माय सेल्फ अपडेटेड। आई लिसन टू गुड पीपल। तो मुझे लगता है कि मेरा सेट है। एंड मे बी दैट्स द रीज़न व्हाई यू हैव जॉइन्ड मी आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच। Um, how are you like? How are you, ma'am? I liked your Godi Media context most. Amir Sohail, thank you very much. Thank you. हाँ, गोदी मीडिया वाला बहुत नया है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने सोचा इसको कि कैसे वो लोग न्यूज़ पे डिसाइड करते होंगे। So thank you very much for appreciating that. You can look at my other videos also. Maybe you will like them also. Or who knows? You can take live meet sessions. We can have certain productive discussions as well. हाँ, लाइव मीट मैं सोच रही थी करने के लिए बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस। राइट नाउ दिस इज़ माय फर्स्ट वन सो धीरे-धीरे मुझे लगता है जैसे-जैसे हम लोग अगर वीकली करते हैं, मान लो वीकली हर सैटरडे अगर मैं एक लाइव करती हूँ या 2 हफ्ते में 1 बार एक लाइव करती हूँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू यू नो हैव दोज़ काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करना चाहें और उसमें कोई वो देना चाहे ना इन इन अपना
क्या कहते हैं इनपुट देना चाहे, आई एम श्योर दैट कैन वर्क. Mukesh Kumar sends hearts. All of you sends heart. Thank you, thank you, thank you. Meghna, Meghnad, another real G. Absolutely. Liked your National Troll Precision Center video. Thank you very much. I did this National Troll Precision Center Valley videos were also one of my initial, the first contents which I made, and people loved those call center videos. Hello, Dr. Marisa. Love you for language. I'm a teacher of English too. The play with words is phenomenal. Thank you very much, Asha Chandranji. I am very, very um, honored and humbled to hear from a fellow teacher. The punch, the biting satire, and the wacky humor. I love them all. Thank you very much. Thank you. Every time a teacher appreciates me, I go back to school. I'm like that little girl. So thank you very much. In fact, one of when I started doing my Dukdarshan क्योंकि पुराने दूरदर्शन चैनल स्टाइल का वो है ना, क्या कहते हैं उसे दूरदर्शन के चैनल स्टाइल का न्यूज़ रीडिंग है. तो a lot of people compared with me with Shobna Jagdish and all the other news readers who were there, and I it was beautiful, but the feeling was beautiful. But then an English news reader, Rini, she was a newsreader at that point of time, and she looked at my video, and she had like right now she has like very few followers, like 2,500, 2,600 followers. But when she commented, and when I realized who that was, I was like, "Mera to safal ho gaya, mujhe aur kuch nahi chahiye." Because they are the people that you have grown up with. I have grown up with listening to them, right? So इसीलिए अच्छा लगता है. Hi, this is Shabaz from Uttarakhand. Hello, Shabaz Kids Cafe. Sainath, hello, ma'am. Ibrar, you retracted a message. Why? This is a safe space. You can tell me whatever you want. Okay. Okay. All right. Or ask me whatever you want. Hi, you are really a gem. Thank you. Thank you. अभी मैं थोड़ा सा अपने अपने तारीफ वाले कमेंट्स कम पढ़ूंगी, हाँ, क्योंकि मतलब शर्म आती है, इतनी ज्यादा भी वो नहीं है कि नहीं सब पढ़ते रहो. क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैं उनको I'll read them out and if somebody wants a shout out. Um, okay, Sanchit Mishra wants uh, a shout out of their name, Sanchit Mishra. Thank you very much for coming in, and I hope you are here and hope you continue to enjoy my videos. Oh, you can send money on these things? Eh, Rahul Deen Dayal says, he gave me a little bit of money. Thank you very much. And what do you think about unemployment in India? What's there to think? It's there. It's absolute. It's everywhere. And one of the reasons why I'm able to do this, why I'm able to do this video is that because I have a job. I have a job. I can afford equipment. I can afford time. I can afford to read. I have the privilege. So ये सारी चीजें है. तो unemployment, I think we are at the like probably at the highest level ever in the last 40 years. So yes, that's there. So no, एक second, बहुत नीचे चला गया. I don't even realize how that happened. Sorry. Wait a second. There are so many comments, यार. मैं कैसे पहुंचूंगी तब तक? मैं तो बहुत ऊपर ही हूँ अभी तक. Damn. Okay, I'll just read whatever is coming up. Okay. Wait a second. Okay. Lokesh say Meghnad sub here. Why Medusa? Why not Athena? Okay. Medusa, because Medusa is a very, very misunderstood character, and not misunderstood but misunderstood ही बोलेंगे उसको, okay, because Medusa has hair, her hair is made up of snake, वो सांपों वाला सर है उनका, and she is a very, very powerful character, and उनको उनके बारे में कई सारी कहानियां हैं. One of the stories is that she was a devotee of Athena. और अथीना के उसमें अथीना के टेम्पल में वो साफ सफाई करती थी, काम करती थी. एंड देन वन डे एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड बिकॉज शी वाज अ डिवोटी ऑफ अथीना शी वाज हैड टू रिमेन सेलिब्रेट. एंड देन वन डे शी वाज SA'd like forcefully, I don't know if I can say the word here on YouTube, by RAPED, by Athena's husband, and who is also a god. And after that, Athena, instead of protecting her devotee, protecting her, the person who was protecting her sister, instead of doing that, she cursed her with a head of snakes, and she's like, "Hey, तुम्हें जो भी कोई भी मर्द देखेगा तो वो पत्थर बन जाएगा" टाइप से.
So, the current feminist reading, so of course people see her as a victim, and then after seeing her as a victim, with her entire figure of the fact that she's a monster, she has a head of snakes, etc., made her into a monster. तो पहले वो victim देखते थे, उसके बाद उसको monster देखते थे, तो कभी उसका सही आकलन हुआ ही नहीं. But later on, feminist reading, current feminist reading, in fact, sees her as a survivor, sees her as a person who stands up for herself and is a fighter. तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है. मुझे I love strong female characters. I have always tried to identify myself with strong female characters. कभी-कभी आप चारों तरफ चीज़ों को देखते हो तो आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है. तो fake it till you make it वाला है ना, कि आप pretend करो कि you are this fierce goddess, fierce um, पावरफुल पर्सन, कि जिसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. आप प्रिटेंड करो तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाक़ई में वैसे हो जाओ. तो मुझे भी ऐसा लगता है. तो थैंक यू लोकेश फॉर दिस क्वेश्चन. Um, and then we have one second. I'll just answer the questions. Rajiv Bijalvan, you have bought a super thanks. Thank you very much. Thank you. I'll just take a quick moment and thank these people. Okay. And I'm reading the comments apparently very, very slowly. So I'm really sorry for that. Okay. I don't know. Damn, I don't know how to operate this. Okay. Top chat. All right. One second. Let me just thank these people first. Okay. I have Dr. Logic. 100 रुपया दे रहा हूँ, 1000 रुपए वापस चाहिए. Shut up. Okay. Oh God. Thank you. Thank you. Uh, okay, I have thanked Rahul Deendayal. Right, and I'll also answered your question. All right, let's go back to the chat. Okay. Oh, the top chat is because so that some in problematic stuff is not visible. আপুনি চাইনাৰ নেকি? নহয়, মই চাইনাৰ নহয়. কৌস্তভ বৰগোহাঁই. নহয়, মই চাইনাৰ নহয়, মই অসমৰ. তোমাৰ ওচৰে-পাজৰে আছে চাগে অসমীয়া মানুহ এনেকুৱা মোৰ নিচিনা দেখা, চাই ল'বা. Anyway, Himanta, Noida brother, have you watched the movie A Man from Earth? There is a line in which that I want to share. It said, "A simple path to goodness does not need a supernatural roadmap." Yes, A Man from Earth is one of my brother's favorite movies. Actually, he has recommended it for me to watch a number of times. Unfortunately, I have not been able to watch it. Sorry, but this is a very profound line. So thank you very much. Ames Darbhanga was best satire. Thank you very much. I have seemed to miss a lot of questions. Diva says Diva is one of my members. Yay! Thank you so much for coming and thank you so much for joining in. I thanked you in the beginning of the video. So much courage you have. Would you like to suggest something to ordinary people who want to speak up but are afraid? Um, कितना मतलब it might sound little bit क्या कहते हैं उसको condescending, but and I understand that everybody has their own privilege and मेरे पास बहुत सारा privilege है इसलिए मैं बोल पाती हूँ. हर कोई हो सकता है might not have that kind of privilege. Somebody might have a difficult job, somebody might have a difficult family situation, so it might not be possible for everybody to speak up. Having said that, having understood that, still यही समय है. इसके बाद भैया बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है? 2024 के बाद मुझे नहीं लगता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है? अभी ही फ्री एंड फेयर नहीं है, लेकिन 24 के बाद मुझे लगता है बातें और बिगड़ जाएँगी, लॉज़ और चेंज हो जाएँगे। हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोना डू विद द इलेक्शन कमीशन। एक तो यूनिवर्सिटी पोज़ीशंस में डी-रिज़र्व करने के लिए बिल ऑलरेडी आ गया था, रिप्रेजेंटेशन कहाँ चली जाएगी? नो क्लू। सो व्हाट डू यू हैव टू मतलब आई थिंक यू हैव अ लॉट टू लूज़ डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो। तो अपना ख़्याल रखो और मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक अ बिग डील अबाउट स्पीकिंग अप, लाइक छोटे-छोटे सिचुएशंस में ही आप स्पीक अप करना शुरू कर दोगे ना, आस-पास कुछ हो रहा है, आस-पास किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी अगर शुरू मुझे लगता है वो चीज़ें होती थी पहले, होती थी। अगर कोई कुछ किसी को बुरा कहता था, हम ही लोग बोले जाते, "तू ऐसे कैसे बोल सकता है? हाउ डेयर यू से दिस?" सो उस तरीके की चीज़ें जब हम लोग खुद ही एक-दूसरे के साथ करते थे ना, आई थिंक वो ही एक
फैब्रिक को तैयार करता था, वो फैब्रिक अब मतलब छिन्न-भिन्न हो रहा है ना, तो इसीलिए आई थिंक यू नो रवीश कुमार फैन क्लब 2 वर्ड्स फॉर सुधीर चौधरी जी। नाम ना लो उसका, प्लीज़ आई ओह माय गॉड दैट मैन हैज सो मच टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ना होता क्या है ना कि अगर आप आपको सोचना ना पड़े आप हमेशा आपके सामने जो लिखा है आप वही पढ़ रहे हो आप वही बोल रहे हो तो आपका दिमाग भी छोटा हो जाता है तो मुझे लगता है सुधीर सफर्स फ्रॉम दैट टेलीप्रॉम्प्टर से सुधीर टेलीप्रॉम्प्टर से मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ सुधीर की ही बात कर रही हूँ ही सफर्स फ्रॉम दैट ओ ही हैज स्टॉप्ड यूजिंग हिज ब्रेन एंड एवरी टाइम ही यूजेस हिज ब्रेन इट इज फॉर दी लाइक फॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी whatever. I hate, I detest these people. Ma'am, can you give some words regarding Manipur? What do Okay. Manipur, I'm sure all of you guys know it has been in a terrible, terrible situation for the last 7 months. We have all unfortunately seen that unfortunate and horrible video. Not seen it, but at least we have heard of it. It's in a very, very terrible situation, and of course, nobody is talking about it. Nobody's center में तो कोई बात हो ही नहीं रही है, ठीक है? और इट्स लाइक अपनी अपनी हालत पे उनको छोड़ दिया गया है। इतने दिनों से वो सेक्शन कौन-सा सेक्शन होता है कर्फ्यू के वो प्रेसिडेंट्स रूल से पहले वाला, वो वहाँ लागू है। सेक्शन 364, 365 कर्फ्यू के पहले वाला जो सॉरी प्रेसिडेंट रूल से पहले का जो लागू होता है, द लास्ट स्टेप बिफोर प्रेसिडेंट्स रूल, दैट वो लागू है और पता ही नहीं किसी को मतलब सीक्रेट में आपने लागू कर रखा है। ठीक है, अब सीक्रेट में आपने सेक्शन वो लागू कर रखा है प्रेसिडेंट्स रूल से बिफोर वाला सेक्शन लागू है एंड नोबडी नोज़ एंड देयर इज सो मच ऑफ लाइक इट्स सो क्लियर कि एक एक पर्टिकुलर गुट को आप आपकी सरकार, आपके एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड कर रही है एंड इट्स लाइक द अदर ग्रुप व्हिच इज नथिंग हु इज अ माइनॉरिटी इज एक्चुअली सफरिंग, राइट? आई डोंट नो व्हाट टू डू मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वहां पर फंड रेजिंग की थी और उस समय में जब बहुत मुश्किल थी तो वहां पे उन्होंने चीजें पहुंचाने की कोशिश की थी जो जरूरी जरूरत का सामान था वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश की थी आई डिड कंट्रीब्यूट टू दोज प्रोग्राम्स बट I don't know. Like it's an utter failure of our government, utter failure of our people also to even hold this such kind of a government accountable. ऐसे एक सरकार को accountable मतलब अब तक ऐसी ऐसी एक ऐसा सिविल वॉर एक कोने में आपके चल रहा है, आपके देश के कोने में सिविल वॉर चल रहा है और आप कपड़े बदल-बदल के कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी एक नारा लगा रहे हो, कभी दूसरा नारा लगा रहे हो। ओह माय गॉड! Article 355. Thank you, Abhishek Sarkar for telling me. Thank you. Um, one episode on HB Himanta Biswa satire. Maybe I will. Maybe I will. I did do it once. एक बार मैंने मेरा एक एपिसोड है पुराना कि कौन से शब्द हैं जो हिमंतो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है तो आई डोंट रिमेम्बर कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था बट एनीवे कौन से चैनल की न्यूज़ फ़ॉलो करें? मैं तो राइट नाउ आई डोंट वॉच एनी न्यूज़ व्हिच कम्स ऑन टीवी। टीवी का मैं कोई भी न्यूज़ नहीं देखती। ऑन यूट्यूब आई ऑफ कोर्स वॉच रवीश एंड आई वॉच डीडी लाइव फॉर देयर अपडेट्स फॉर देयर डिबेट्स एंड ऑफ कोर्स रवीश बिकॉज़ रवीश का एक मुझे लगता है कि एक जनहितैषी एक आउटलुक रहा है हमेशा से एंड मुझे लगता है किसी भी समय में, किसी भी सरकार में, किसी भी परिस्थिति में एक उस तरीके का लुकआउट होना ज़रूरी है, जिसमें आप लोगों के लिए बात करें, लोगों के हक के लिए बात करें, उनके इश्यूज़ के बारे में बात करें, हैं? Vijay Machale says Vijay Machale is also a member of my channel. Thank you. Don't you think reservations favor one against another? Will it not be proper for having as many jobs as many deserving ones? Don't you think reservations favor one against another? No, I don't think so. Because favor की बात तब आती जब आप दो समानार्थी समान लोगों के बीच में आप वो करते या फिर फेवर को देने का एक पर्टिकुलर कोई पैमाना होता है। जैसे मेरिट्स दोनों का एक है या दोनों के सिचुएशंस एक है या दोनों का टैलेंट सेम है, एक ये है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जब एक ऐसी दुनिया है हमारी जहाँ सब लोग सिमिलर नहीं होते, जब सब लोगों की परिस्थितियाँ सिमिलर नहीं होती। कई लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके उनके पास वो अम, वो रिसोर्सेज़ नहीं हो पाते हैं जिससे वो अपने टैलेंट को और उभार सकें, राइट? और उसको शाइन कर सकें, उसको पॉलिश कर सकें। सो एज़ अ वेलफेयर स्टेट अगर हम चाइना में रह रहे होते तो बात और थी।
हमारा एक टेक्निकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि हमें हमारी जनता की, हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और उस वेलफेयर में अगर जिसके पास जो नहीं है, राइट? सोशल कैपिटल नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, क्या कहते हैं उसको और किस तरीके के कैपिटल होते हैं, जो भी कैपिटल है वो नहीं है। अगर उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, तो आपको उसे भरपाई करनी पड़ेगी, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एक एज देना पड़ेगा। राइट? तो मुझे नहीं लगता कि रिज़र्वेशन फ़ेवर करता है। रिज़र्वेशन और अगर करता भी है तो करना चाहिए। करना चाहिए बिकॉज़ दैट मेक्स इट अ फेयर वर्ल्ड, दैट मेक्स जो वो है ना, वो स्टार्टिंग लाइन जो होती है लोगों की, उन लोगों की स्टार्टिंग लाइन सेम करते हैं। जैसे कोई लड़का, कोई बच्चा जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मी, मुझे ज़िंदगी में कभी भी क्लास 10th की बोर्ड्स की मैंने पढ़ाई की थी, 90% 92% मार्क्स आए थे। क्लास स्कूल टॉप किया था। मुझे कभी भी घर पे काम नहीं करना पड़ा। ठीक है? मैं दिन भर घर पे काम करके या बाहर मज़दूरी करके रात को स्कूल की पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठती। मैं रात भर दिन भर स्कूल में रहती थी, स्कूल की पढ़ाई करती थी, रात में आती थी, रात में भी स्कूल की पढ़ाई करती थी। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई पे था। ना मैं अपने घर की देखभाल करने में लगी हुई थी, ना अपने भाई को पालने में लगी हुई थी, ना किसी और दूसरी चीज़ में काम में लगी हुई। सो मेरा कंसंट्रेशन कंप्लीट व्हाई? बिकॉज़ मेरे पास वो रिसोर्सेज़ थे। मेरे पास वो सोशल कैपिटल था, मेरे पास वो पैरेंटल जो जनरेशनल वेल्थ है, जो जनरेशनल अ, हमें रिसोर्सेज़ मिले हैं, जनरेशनल ऑप्शंस मिले हैं, वो था मेरे पास। तो इसीलिए मैं सब कुछ अपने पढ़ाई पे, अपने उस पे ध्यान दे पाई एंड आई एक्सेल्ड। उसी तरह से देयर प्रोबेबली आर प्रोबेबली क्या देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड पीपल इन दिस कंट्री जिन जो दिन में 10 काम करते हैं, फिर रात की पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर भी पढ़ाई में वो लोग नंबर लाते हैं और या फिर उनके नंबर अगर 92% नहीं होंगे तो 86 होंगे या मान लो 60 होंगे, 60 ही होंगे। तो अगर 60 उनको अगर एक एज नहीं दिया गया तो वो आगे कैसे बढ़े? उनके पास वो जनरेशनल वेल्थ, उनके पास वो जनरेशनल रिसोर्सेज़, वो अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे आई? सो मुझे लगता है दिस इज़ फेयर एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। एक समय ऐसा आएगा वी होप कर सकते हैं, एक समय इस उसकी तरफ तरफ हम जा सकते हैं। एक समय ऐसा आ सकता है व्हेन यू कैन होप दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर दैट विल बी वंडरफुल, राइट? Do you think Rajashri Roy asks, do you think if our country is ready for dumping the reservation system, will we live to see that? No. नो वी विल नॉट लिव टू सी दैट बिकॉज़ अभी भी जो ब्राह्मणिकल माइंडसेट है, अभी भी जो मेरिट में आप बहुत सारे लोग मेरिट को और अपॉर्च्युनिटीज़ मेरिट को सोचते हैं कि एक ऐसे ही पैदाइशी चीज़ है, राइट? टैलेंट जो है which is not true. It's a combination of a lot of things. It's a combination of resources. It's again, all I'm repeating myself. So yeah, Ahomya regionalism. Give me a whole question. I don't understand what exactly do you mean by that. 56-inch pakoda. I like your username. You're only favorite for me to know current use. I always am waiting. Thank you. I'm from Jharkhand. Tell me about say about CM Hemant. Hemant Soren. Hemant Soren is an extremely Pawan Kumarji. Thank you very much. I my last video is in fact on Hemant Soren. So if you want to, you can definitely go and check that out. Make it economic based. No. Reservation. I'm guessing talking about reservation. I am not in favor of making it economic based because that's not the only kind of discrimination that is there. Rich and poor का सिर्फ एक division नहीं होता इस देश में. ठीक है? अगर rich and poor का division होता तो आप अमीरों में दलितों को भी देखते, अमीरों में आदिवासियों को भी देखते, मेजॉरिटी ऑफ आदिवासियों को आप देखते, और मेजॉरिटी ऑफ दलितों को देखते. तो इकोनॉमिक वाला नहीं है. दैट्स नॉट द थिंग बिकॉज़ अगर मान लो कभी ऐसा होता है ना, जैसे दलित अगर वो बन भी गया, अमीर बन भी गया, आई हैव सीन लाइक सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस. अ फ्यू डेज़ बैक समबडी आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हू इज़ इन द यूएस और वो दलित है और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी खरीदी टेस्ला. टेस्ला उन्होंने गाड़ी खरीदी और उन्होंने उसमें सामने नंबर प्लेट लगवाया और उसमें दलित लिखवा मतलब क्योंकि वहाँ पे वो कर सकते हैं ना आप वो यू कैन चेंज योर क्या कहते हैं vanity plates. Dalit likhwaya and then somebody scratched his car. So it does the economic or money is not the only kind of discrimination. बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं. इस देश में अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मुझे ऐसा लगता था कि इकोनॉमिकली होना चाहिए. आई वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल बट आई हैव चेंज्ड माय माइंड कंप्लीटली और यू माइट से दिस इज़ एनेक्डोटल बट इट रियली इज़ नॉट. अगर आप आस-पास देखोगे एवरीवेयर इट स्टिल इज़ द केस. मिर्ज़ापुर में देख लो, मिर्ज़ापुर याद नहीं? मिर्ज़ापुर सीरीज़ नहीं है उसमें जो आईपीएस ऑफिसर है और उनके घर खाना खाने जाता है वो कालीन भैया के यहाँ खाना खाने के लिए जाता है तो उसको स्टील का ग्लास देते हैं.
और स्टील का ग्लास है, किसी और चीज़ का ग्लास और प्लेट देते हैं खाने के लिए बिकॉज़ ही इज़ लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो इट्स एवरीवेयर। लास्ट मन की बात कब सुनी? AK-47 आस्क्स लास्ट मन की बात कब सुनी? गौरव कपाही, थैंक यू वेरी मच। गौरव कपाही हैज़ गिवन मी ₹200। थैंक यू। डू यू थिंक आफ्टर 24 इलेक्शन देयर विल बी चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत चेंज करेंगे ये लोग, खत्म कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम श्योर। क्योंकि जितना इन्होंने न्याय संहिता के नाम पर आईपीसी बदला है ना, अ, उसमें उसमें मतलब द चेंजेस एंड द एक वन जो मुझे अभी बहुत प्रोमिनेंटली याद आ रहा है वो है पुलिस कस्टडी वाला जो टाइम है। पुलिस कस्टडी वाला टाइम पहले अभी 15 पहले 15 दिन का था, ठीक है? वो इसीलिए रखा गया था कि 15 मतलब ताकि पुलिस के जो मारपीट है वो कम हो, टॉर्चर का वो कम हो और समय मतलब अवधि कम हो। नाउ द पुलिस कस्टडी हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 90 डेज़, सो 3 मंथ्स। कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन? वैसे होने को तो 15 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अगेन, सो दैट्स द थिंग। What else? What else is there? गौरव कपाही, ओह! गौरव कपाही सेज एक सॉन्ग सुना दो। नहीं, नहीं, ये गाना सुनाने वाला प्रोग्राम थोड़ी है। गा आस्क मी एनीथिंग है, गाना आप मुझे बोलो, मतलब सवाल पूछो तब मैं बताऊँगी और मुझे जो-जो सवाल दिख रहे हैं दोज़ थिंग्स आई एम आंसरिंग, ओके? क्योंकि ऊपर-ऊपर चले जा रहा है ना, इसीलिए। Rahul Gandhi per when video? What kind of video though? What kind of video do you want? Because I have a number of videos of for Rahul Gandhi. मतलब बहुत सारी चीजें जो उनके न्याय यात्रा पे मैंने बनाई थी और फिर शुरुआत में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था which went actually pretty viral. उसके शायद 800-900 के व्यूज थे। कोई भी वीडियो मेरा आज तक 1 मिलियन नहीं है। That's like not a concern because अगर एक भी इंसान तक पहुंचे मेरी बात वो भी मेरे लिए काफी है। But yeah. AED25. Sultan, your work is highly appreciated. God bless you, sister. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please let me know if you want me to answer a question. Okay. Thank you. All right. Jatin Bansal says, ma'am, it's not just about the marriage rights of the LGBTQI plus community, but the bullying that we face in the university. Shouldn't there be law to stop this type of bullying? Um, absolutely. Yeah. Absolutely. 100%. मुझे मतलब मैं जब कभी इन सब चीज़ों के बारे में डीपली सोचने लग जाती हूँ ना, तो मैं बहुत डिप्रेशन वाले फेज़ में चली जाती हूँ। बिकॉज़ इट्स व्हाट आई फील इज़ दैट it's just let everybody just be like what they do or what they feel is not your concern आपका especially when it comes to the LGBTQI plus community इतना ज़्यादा मतलब persecuted होता है ना there was this one time I'll not say this but I b was I there was a conversation I was having with a few people and they're like कि अरे अपने माँ-बाप के बारे में भी नहीं सोचते हैं I'm like aren't like parents supposed to love their children unconditionally? Unconditional and what kind of condition is this? कि only if you are heterosexual, only if you follow the norms or of the society that you live in, only then will we love you. ये how is this unconditional? Like I don't understand मतलब कुछ चीज़ें जो जब जब कुछ चीज़ें आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लगने लगता है, मुझे तो बहुत ऑब्वियस लगता है कि हाउ कैन पेरेंट्स नॉट लव देयर चिल्ड्रन लाइक फॉर समथिंग लाइक दिस? So it becomes very difficult for me to answer. But then again, I'm with you. We'll see one day because at least I think that at least the LGBTQI plus movement is quite strong. Um, in our country there is this person called Jeet and they have this group called Yes We Exist. They're doing wonderful work. They provide they're working for awareness. I think they also provide sometimes pro bono legal advice वो भी करते हैं. So if you guys have if anyone in this community is LGBTQI plus, you please go ahead and follow Yes We Exist and share your work. And just be kind. There's like no other thing but एक दूसरे के लिए बस आप प्यार से बोलो ना मतलब just be kind to other people, that's all. Other than Sangees. There's no reason, there's no need to be kind to Sangees.
ओके, व्हाट नेक्स्ट? और क्या क्वेश्चन है? अगर मोदी सर आपकी स्क्रीन देखे तो उनको क्या बोलेंगे? रिज़ाइन कर दीजिए सर। बस कीजिए सर, हो गया। What's your opinion on rising Buddhism popularity in Bahujan caste group? What's its future in India? I should not be having an opinion. Religion is a perfectly religion. Max asked that question, and I think religion is a completely private matter. And if the Bahujan caste is or members of the Bahujan community are choosing Buddhism, they have every right to choose Buddhism. They have every right to practice Buddhism. So good for them. What's his future in India? Buddhism हमारा past है. इतना बड़ा रिलिजन, इतना बड़ा रिफॉर्मेटिव रिलिजन और रिलिजन व्हिच हैज़ सो मच ऑफ रिफॉर्म इन इट, टॉक्स अबाउट रिफॉर्म, टॉक्स अबाउट द मध्यम मार्ग, वो हमारे ही मिट्टी से निकला है, हमारा पास्ट है। तो एवरीथिंग कम्स बैक। Any video on budget? Bhaskaran asks any video. I'm so sorry, I'm not able to pronounce your last name. Asks any video on budget? No, अभी तो interim budget है, इसमें तो कुछ वो भी नहीं मतलब है भी नहीं। और इनफैक्ट बजट बजट पे रैंटिंग गोला हैज मेड अ वेरी गुड वीडियो। प्रधानमंत्री 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 दिस योजना प्रधानमंत्री दैट योजना एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू मिमिक्री एज वेल एज शी डज बट या just do that. আপোনাৰ হিন্দী ইমান ভাল কেনেকে? Just asking as a fellow Chinese. Costa Borguhai is laughter riot. I'm more I studied in केंद्र विद्यालय। मैं केंद्र विद्यालय की पढ़ी बच्ची हूँ। तो मेरे आस-पास सारे मेरे जो दोस्त जो थे या तो सीआरपीएफ के बच्चे हुआ करते थे शुरुआती में और फिर जब जो टीचर्स थे, टीचर्स मेरे जबलपुर से थे, टीचर्स मेरे बिहार से थे, टीचर्स मेरे मध्य प्रदेश से थे, टीचर्स सारे मेरे नॉर्थ इंडियन बेल्ट से रहे हैं, जो ही मतलब हमारे स्कूल में। तो मेरी हिंदी ऑटोमैटिकली अच्छी हो गई। बट थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक दैट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर मेडुसा तो मोदी जी सर झोला लेके चले जाइए प्लीज़। मधु तन्वर एग्ज़ैक्टली सर आप प्लीज़ चले जाइए, झोला लेके चले जाइए, हो गया। राजेश बाबू टेल मी ऑनेस्टली ओह माय गॉड वेयर डिड योर राजेश वेयर डिड योर कमेंट गो? आई एम सो सॉरी। गौरव सिंह आई एम आल्सो केवीएन भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। Where is I'm so sorry. I've Rajesh Babu. Okay, tell me honestly, how about India is gonna move to the thoughts of the new generation? About how India is gonna move to the thoughts of the new generation? Because it's still governed like 30 years back. I don't really understand this question. I'm so sorry. How India is going to move to the thoughts of the new generation? Hmm, कैसे जाएगा? Anyway, I think the new generation, other than those like going for rallies on streets, the new generation is quite intelligent, or the new generation is, you know, mm, it knows how to do their own work and knows how to do their research. So मुझे लगता है कि the new generation will be okay, है ना? देखते हैं, कोशिश करते हैं। How do you keep yourself sane during all this mess? Zishan asks, how do you keep yourself sane during all this madness? I mean, satire could be a coping mechanism, but when you are alone, the gloom takes over. I'm a Muslim, left UPSC preparation because of all of this. First of all, you should not leave UPSC preparation. You should definitely complete your UPSC preparation. Um, finish that. ठीक है? Like get into a job and like secure yourself because that's like the first priority. I understand कि gloom होता है बहुत ज़्यादा, talk to someone, go to therapy, that's the best option, ठीक है? The best option. Surround yourself with people, look at stuff which is surround yourself with people who are fighters, ठीक है? जो who are not just like apolitical नहीं, अरे छोड़ना रहने देना क्या बात करनी है, no, not those people who are in who talk about these things, who fight, क्योंकि सोल्यूशन अभी नहीं निकलेगा, सोल्यूशन इन चीजों का बिकॉज ये पॉइजन इतने अंदर तक जा चुका है ना कि सोल्यूशन अभी नहीं निकलेगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दिस बट दिस इज द ट्रूथ, बट देयर इज नो अदर वे देन टू फाइट। लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी लड़ाई अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो तुम यूपीएससी की तैयारी करो। वापस शुरू करो, वापस से करो, सिस्टम में जाओ एंड
एंड देन डू योर ड्यूटी। तुम्हारा जो संविधान की तरफ तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए, देश के प्रति तुम्हारी जो ड्यूटी होनी चाहिए, तुम्हारे लोगों की तरफ, तुम्हारे कम्युनिटी की तरफ जो तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए, वो करो। दैट इज़ ऑल यू कैन डू। यू कैन डू योर जॉब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। मैं वही सोचती थी कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं दिस नहीं कर सकती, मैं दैट नहीं कर सकती। आई यूज्ड टू थिंक एक्ज़ैक्टली लाइक दैट। और क्या होता था डिप्रेशन, अकेले में भी डिप्रेशन, सामने भी डिप्रेशन, लोगों के सामने भी हर हर टाइम में सर दिमाग में यही सब घूम रहा होता था। बट uh, that is the only I chose my way. This is my way of doing this, like making videos, talking about it, uh, finding kindred people like you all. uh, this is my way. So you need to find your way, and you need to finish that preparation, and you need to finish that exam. Go ahead. All the best, Ishan. Thank you for discovering no self-respect, Asam. Thank you. Ninth class physics. uh, if if 2024 election is won by BJP, what would India look like in the next 5 years? That is actually a topic for for a video. Dr. Purnur Kaur, thank you for your question. I think that's a very good topic for a video, and I have something made in mind, and I will be releasing a video on this a few days later. और 5 साल क्या, अगर 24 में आप ये आ गई, अगर क्या, मुझे तो लग ही रहा है आएगी अब की बार 400 पार। Next 5 years. And economic devastation is ये मैंडेटरी, क्योंकि इकोनॉमी को तो हमने एकदम कंप्लीटली तबाह कर दिया इन लोगों ने, ठीक है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो जो किसान थे, जो लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर थे, those things are almost all gone. So there will be an economic crunch in the middle of the next 5 years if they come back, because they have no idea how to do things, है ना? मनमोहन सिंह थोड़ी बैठा है कोई वहाँ पे इकोनॉमिस्ट, जो एलएसी से इकोनॉमिक्स करके आए हैं और वो मरती-मरती अर्थव्यवस्था को जिला देंगे। 90s में हुआ था ये चीज़ एक बार। आई एम आल्सो केवीएन, गौरव सिंह भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। Did you get any threats from BJP? No, not the Imperium Intelligence asks this question. Not the party particularly, but their followers and their bugs. They're in my DMs every day. Haven't you seen our comments also? Sometimes the comments are also there. There was this one person who asked me, "What do you think? The 302 से डरती नहीं हो? 302 is Article 302 is attempt to murder. No, it's murder, not attempt to murder. I think 304 is attempt to murder, but 302 is धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, तो 302 से डर नहीं लगता." So directly they were asking me this question. So yeah, what will be the future of Modi once good riddance? Anwar Rahman, I think he's going to go to jail. Agar if there is a God. योर एक्टिंग इज फायर। अरे मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, पता है? आई डिड नॉट थिंक दैट दिस इज एक्टिंग, बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे। मतलब दोस्तों के सामने, क्लास में, या हस्बैंड के सामने, या फैमिली के सामने, दिस इज आई डू दिस एवरी लाइक हर दूसरे टाइम पे हर दूसरे मिनट में करती रहती हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये एक्टिंग है। तो यही चीज़ मैं कैमरा के सामने कर रही थी। तो एनीवे, सो या थैंक यू वेरी मच। राहुल कुमार, बीजेपी जब भी सॉरी यार, ये ऊपर चला जाता है, मुझे दिखता नहीं है ना, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस। Anyway, Jitin Nair asked, did you want to join the academia after your PhD? How do you feel about the academic culture in India? Um, I kind of want to think, I would want to believe that I am a part of academia because I have publications and I have, yeah, I go to conferences and stuff. And academic जो वो है, academic culture जो है देश में, पहले था। Have you seen what happened to that Ashoka University guy who tried to write a paper on the EVMs and vote manipulation and stuff? If there was any academic culture in the country, people would have banded around him, like professors would have banded around him. Universities used to be a place where establishment was questioned every single time. I remember मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स यार, व्हेन इंदिरा गांधी केम, जब ब्लैक फ्लैग उनको दिखाया गया था, और उनको उस यूनिवर्सिटी में, द यूनिवर्सिटी व्हिच इज नेम्ड आफ्टर हर फादर, शी वाज नॉट अलाउड टू एंटर दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है? ये सिर्फ टीचर्स ने नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, टीचर्स भी उसमें शामिल थे। ठीक? सो दैट वाज़ द कल्चर कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल रख सकते हैं। आप वो एक हाईएस्ट और एंड दैट पर्सन एंड दैट प्राइम मिनिस्टर वाज़
हैड उनमें वो गरिमा थी कि वो खड़े होके उन्होंने अ, बातें सुनी थी। इवन मनमोहन सिंह व्हेन ही केम, ही वाज़ शोन द ब्लैक फ्लैग इन द यूनिवर्सिटी। And then he had to, I think, address the crowd from the gate itself. I think he was also not allowed to enter, something like that. ये है। So ऐसा एक कल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। पेपर्स निकलते थे। रोमिला थापर हैज कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एकेडमिक सर्कल। People like Jayati Ghosh have come out from the university. Nivedita Menon, etc. Like all their like personal politics aside, but their academic work is stellar. So yeah, इस कल्चर का ही ये कल्चर हुआ करता था। आनंद कुमार हैज़ जस्ट become a member. Thank you very much, Anand Kumar ji. Okay. If the state governance, Tathagat Manus asks, if the state governance continues in the similar manner, will the political map of India remain the same in the next 10, 15 years? Please share your opinion. I think that one of the जो ऐसा मैंने अपने डिस्कशंस में भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन है, एंड इन फैक्ट आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज अ वेरी वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिकल thinker, okay, aside Lara Bakram. Both of us, like when we are talking and when I'm talking to other people also. So usme na, one of the things he told me once was that the one of the ways in which BJP wants to completely dominate the political scenario in this country is by decimating the regional political parties. क्योंकि आप जैसे ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दोगे ना, रीजनल जो मुद्दे हैं, रीजनल मुद्दे छुप जाते हैं। रीजनल मुद्दे कभी-कभी क्योंकि कभी-कभी रीजनल मुद्दे, सेंट्रल मुद्दे या पार्टी के आइडियोलॉजीज़ से बहुत इतर होते हैं। Right? That is the reason why you see somebody like BJP or somebody जो beef के नाम पर lynching कर देते हैं, some an organization like that support the idea of eating beef in the Northeast. That's the reason why they do it, right? Because regional variations and regional मुद्दे अलग होते हैं, regional issues अलग होते हैं। रीजनल इश्यूज अलग होते हैं, तो उन सारी चीजों को रीजनल पार्टीज टैकल करती है। तो धीरे धीरे रीजनल पार्टीज को जब कभी खत्म कर दिया जाता है ना, तो आपका एक वर्चस्व बन जाता है। सो इट इज, आई थिंक एज फार एज रीजनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न, दैट इज देयर वे। असम में जैसे असम गण परिषद हुआ करता था एक पार्टी, दैट पार्टी इज कंप्लीटली गॉन, इट्स नॉट देयर एनीमोर। और है भी तो बहुत उस मामले उसमें। तो दैट इज दैट। सो मुझे नहीं लगता स्टेट गवर्नेंस, एक समय ऐसा आएगा, पता नहीं, आई एम तो बहुत सिनिकल ना। तो मेरी बात मत सुनो, इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग फेडरलिज्म हटाकर पूरा वो कर देंगे, सारा स्टेट का रूल होगा, और फिर धीरे-धीरे उसके बाद चाइना के हम लोग उसमें चाइनीज़ वाली लाइन में चले जाएँगे, वन पार्टी, वन इलेक्शन, वन लीडर। वन पार्टी, नो इलेक्शन, वन लीडर। वन कंट्री, वन नेशन, वन लीडर वाला ऐसे हो जाएगा। How much effect do you think media will have has in poll determination? Oh, it has a lot. It has a lot. Ajay Dhanda asks this question. It has a lot of effect क्योंकि आप आपको पता है ये इन चैनल्स की, जो ये चैनल्स 24 घंटा चलते रहते हैं ना, इनकी इनकी व्यूअरशिप कितनी है? कितने लोग देखते हैं? करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों। घर में कॉन्स्टेंटली ये ऑन होता है। और ये जो रवीश कहते हैं ना, व्हाट्सएप अंकिल एंड ये जो होते हैं, दीज़ आर हू? दीज़ आर सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। देखो देश में क्या है, हमारे देश में हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है? पितृसत्ता में आप आदमी तो आप काम कर रहे हो, अगर महिला भी काम कर रही है तो महिला चलो काम कर रही है। आदमी जब रिटायर हो जाता है तो वो घर पे बैठता है, वो काम कुछ नहीं करता। घर का काम कुछ नहीं करता। घर के में कहीं पे उनकी मदद नहीं होती, कहीं अपने मिसेज़ की मदद नहीं, अपने वाइफ की मदद क्या, अपना काम नहीं करते वो लोग, ठीक है? अदर देन माय डैड इज़ वंडरफुल, ही डज़ हिज़ वर्क। एनीवे, तो मैं अपने पापा के बारे में पापा के बारे में बात बोलने के लिए थोड़ी ना लाइव है। एनीवे, तो होता क्या है कि ये लोग टीवी के सामने बैठते हैं, ये चैनल ऑन करते हैं और 24 घंटा, क्योंकि उनके लिए क्या है ना, हाय-हाय टीवी सीरियल थोड़ी देखेंगे। क्योंकि पितृसत्ता है। डज़न्ट मैटर इफ यू एन्जॉय वाचिंग अ टीवी सीरियल, यू विल नॉट से दैट यू डू इट, तो आप न्यूज़ लगा के बैठेंगे। न्यूज़ में आपको वही चीज़ें मिल रही है जो नॉर्मली टीवी चैनल पे मिलती है। तो आप 24 घंटा ये ज़हर देखते हैं, 24 घंटा एक ही चीज़ को वापस बार-बार, बार-बार, बार-बार नॉन न्यूज़ का न्यूज़ बनाते हुए आप देखते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स हैपन, एंड इट्स जस्ट अम और आपका ओपिनियन बनता है। आप उस ओपिनियन से अपने पूरे परिवार को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अगर आप घर के बड़े हैं, तो अपने छोटे भाइयों को, सबको आप इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहाँ तक परकोलेट करके जाता है ना, जब एक जड़ एंट्री मारती है ना, इट्स लाइक अ होता है ना सीलन। हुँ?
अगर एक बार घर में सीलन हो गई, बेटा, तब तो फाउंडेशनल चेंज करना पड़ता है, तभी होता है कुछ चेंज। अम, ओके, लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर समबडी हू हैज़ नॉट ये क्या आपको लगता है कि अगर ये मीडिया को ये कंट्रोल ना कर पाते तो ये 24 में कभी ना आ पाते? 100% अगर मीडिया हमारे साथ रहती ना, अगर मीडिया सच दिखाती, अगर मीडिया को ये लोग जैसे वो बोलते हैं ना उम, मीडिया को जब जो क्या कहते हैं अगर मीडिया अपना काम कर रही होती ना, दिस वुड नॉट हैपन। एब्सोल्युटली। अमित सॉल ऑल दिस गंगा जमुनी इज़ फ्रॉड। तुम्हारे लिए फ्रॉड होगा यार, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल नहीं। ओह लिसन यू नो व्हाट? बिकॉज़ आई एम फ्रॉम असम और एक चीज़ मुझे एक चीज़ ये चीज़ मैं कहती भी हूँ बहुत और मुझे याद भी बहुत है। बचपन में हमारे घर में जब हम क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर श्रीमंत होंकरदेव बोल के एक हमारे गुरुजी रहे हैं, उनके सेक्ट को उस पंथ को हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। हिंदुइज़्म का एक सेक्ट है, उसमें हम बिलॉन्ग करते हैं। तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं ये। तो शाम के टाइम दिया जलाने का टाइम होता है, ईश्वर का नाम लेना होता है, तो हम लोग तो बाहर खेलने चले जाते थे। तो मम्मी जब हम घर से वापस आते थे ना, तो मम्मी डाँट लगाती थी कि एक तो इतनी लेट वापस आए हो, इतनी देर से आए हो और फिर जब शाम के टाइम का अज़ान होता था, तो बोलती थी, "अच्छा, अज़ान भी हो गई, अब दिया जलाने का टाइम है।" ठीक है? सो दैट वाज़ लाइक अ क्लॉक थिंगी व्हिच वाज़ हैपनिंग। सो ये गंगा-जमनी वाले जो तुम जिसको फ्रॉड बोल रहे हो ना, ये फ्रॉड ही हम लोग जिए हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए जब इस तरीके के या तुम लोगों की तरह के लोगों से मिलते हैं, तो बुरा लगता है। ठीक है? और किसी से प्यार करना या किसी से दोस्ती में रहना और किसी को जीने देना, हाउ इज़ दैट अ बैड थिंग? हाउ कैन दैट बी अ बैड थिंग? किसी को आप जीने दे रहे हो, वो जिस तरीके से चाह रहा है, वो जीने दे रहे हो उसमें बुरा क्या है? हाउ डज़ दैट वर्क अगेंस्ट यू? एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ये था कि योर रिलिजन प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। आपका धर्म आपको कुछ करने से रोकता है, मुझे नहीं, ठीक है? या किसी और को नहीं। मेरा धर्म मुझे रोकता है कुछ करने से, किसी और को नहीं, ठीक? एनीवे गंगा जमुनी तहज़ीब इज़ जो ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गंगा जमुनी तहज़ीब है, वहाँ पे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहते हैं, साथ में वो करते हैं अपने त्योहार मनाते हैं। अ, और पोएट्री भी बहुत सारी यहाँ से निकली है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पोएट्स हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कविताएँ लिखी हैं, ग़ज़लें लिखी हैं, नज़्में लिखी हैं, श्री राम के बारे में लिखी हैं, सो गंगा जमुनी तहज़ीब। ओके, हाउ कैन यू मैनेज दिस काइंड ऑफ करेज? पता नहीं है, मम्मी-पापा ने सिखाया है। Mayuri Majumdar asks, "Do you think things will get worse before it gets better?" I things are already worse, so I'm waiting for it to get better, but I don't know. Or are we already facing the worst possible situation governance-wise? No, it's not worst possible. Worst possible is complete Hindu Rashtra. Anyway, do you speak or understand Bengali? Ishan Bhattacharya says, yes, I speak and understand Bengali. Bangla, actually. Because, again, because I'm a linguist, that's why ये चीज़ें थोड़ी matter करती है. Bengali are the people. The people of West Bengal are Bengali people. The language is Bangla. So it'll be wonderful if you can start using Bangla. But of course, the Bangla is the name of the language given by the people who speak Bangla. But for the others, for the outsiders, for example, it's not Assamese. The language I speak is not Assamese. Assamese is a name given by the English who studied the language, George Grierson, etc. It is Ohomia. Ohomia. I speak Ohomia, but the the name of the language is Assamese in another language, in another language, in English, right? उसी तरह से. So Bangla is the name of the language, and Bengali are the people. Where are you from? I'm from Assam, Azad Ajay. I think you did not see that. अ, उफ़! क्या बताएँ मैम आप लोग की वज़ह से हम लोग प्राउड फ़ील करते थैंक यू। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी ज़ोर से क्योंकि वो अपनी तारीफ़ में थोड़ा-सा इतना नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू।
What do you teach? I teach linguistics. Rishi Arya is asking me, what do you teach? I teach linguistics. Linguistics is Bhasha Vigyan. Bhasha Vigyan is the science of language. Um, Shipra Rachna Singh, Dr. Medusa, is it not possible for some of you like-minded independent freelancers to come together and work as a team to counter Godi media? यार इन सारी चीज़ों के लिए ना लाइक आई सेड बहुत सारी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है और जितना हम लोग हो सकता है उतना हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे मैं और गोला रैंडिंग गोला है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और बाय द वे रैंडिंग गोला's अकाउंट वाज़ सस्पेंडेड ऑन इंस्टाग्राम so she has made a new account ranting.gola.backup. I would appreciate if you go and follow her as well on Instagram. एनीवे तो हाँ, हम लोग करते ही हैं, मैं करती हूँ, मैं मेघनाथ काम करते हैं। मेघनाथ्स वर्क इज़ लाइक ब्रिलियंट, ही इज़ डूइंग मतलब वो ऐसा काम कर रहा है ना जो स याद रखा जाएगा सदियों के लिए बिकॉज़ ही इज़ डॉक्यूमेंटिंग एक्चुअल फैक्ट्स के साथ चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा है ना, so इट्स लाइक वंडरफुल, वंडरफुल स्टफ। सो एंड प्लस इट्स ही हैज़ लाइक लॉन्ग वीडियोज़, so आराम से चीज़ को समझने के लिए वो है उसके पास वो समझता भी है चीज़ों को और आगे आप लोग के रखता भी है। सो आई थिंक इट्स जस्ट ब्रिलियंट। So we are already doing that. Um, I also collaborate with Arpit. He's there on Twitter and on Instagram. And I collaborate with a few meme pages and a few news pages जो um, इस तरीके के न्यूज़ को दिखाने की कोशिश करती है। So yeah, we're kind of doing it already, but on a larger level मुझे लगता है एक उसकी ज़रूरत होती है, certain kind of resources की ज़रूरत होती है। जैसे for example, I want to make longer videos. I want to make more nuanced and more informative videos जिसमें चीज़ों को मतलब वो किया जा सके जो रिसर्च तो बहुत ज़्यादा बट आई हैव अ जॉब एंड आई वर्क एंड एडिटिंग वेडिटिंग करनी होती है और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को फ़ोन वाला एडिटिंग सिखाया है मैं यहाँ पे दोबारा से वो इतना लंबा-लंबा एडिट करके और वो जो ट्रांज़िशन होता है ना ग्राफ़िक्स वग़ैरह होते हैं डालना वो सब मेरे को बिल्कुल नहीं आता और अब मैं सीख भी नहीं सकती तो इसीलिए मुझे उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम लगेगा तो आलस भी लगता है कि यार कौन करेगा टाइप से। इसीलिए। Rahul Dixit, welcome to the BA level membership of my channel. Thank you very much for subscribing. Omar Porade, Srimoy's vlog. Hello, Srimoy. Killa 123 something asks, do you think the same way Hindu dogma is attacked that they would do the same with Islam and Christianity? Hindu dogma is attacked. It already is. Why do you think there is like you think Christianity is a religion जिसका सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है? Have you seen stand-up comedians do their bits on religion? ठीक है? हमारे यहाँ तो रिलिजन में उसको मुनव्वर को अंदर कर दिया, कुणाल के अगेंस्ट केस कर दिया, हर उसका शो कैंसल हो जाता है, कुछ बोल नहीं सकता कोई, ठीक है? क्रिश्चियनिटी में कितना मैंने उस दिन एक देखा उनका आई हैव इट सेव्ड आल्सो ऑन माय फोन वेट I'll tell you. जिमी कार का है टॉकिंग अबाउट रिलिजन और क्रिटिसाइजिंग रिलिजन और समथिंग लाइक दैट ठीक है वो है वॉच गो एंड वॉच एनी ऑफ जॉर्ज कार्लिन शोज वो किसी भी लैंग्वेज के किसी भी फंडामेंटलिज्म के किसी एनी रिलीजन व्हिच बिकम्स फंडामेंटलिस्ट इज प्रॉब्लमैटिक ठीक है बट अगेन आई राइट सैटायर और सैटायर से या फिर व्यंग्य से कोई भी टॉपिक ऊपर नहीं होता किसी भी टॉपिक पे आपको सैटायर करना अलाउड होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे आपको मजाक करना अलाउड होना चाहिए ठीक है बिकॉज व्हाट डज दैट डू दैट brings the topic to the people in a way that they can understand in a way that that conversations can happen right in a way that conversations can happen so मुझे लगता है कि होना चाहिए and if you think that Christianity and dogmatic Islam are not attacked I don't know what rock are you are living under anyway sorry सब फिर से ऊपर चला गया यार satire on Ravish and Rahul when why राहुल गांधी कौन लगता है तुम्हारा या क्यों करूं मैं उस पे satire what kind of decision making is he doing in this country why he is the leader of the opposition is he answerable to me no who is answerable to me the prime minister my prime minister is answerable to me even if I have not voted for that prime minister he is answerable है ना क्योंकि वो वोट के हिसाब से वो जिन्होंने वोट दिया है उन्हीं का पीएम नहीं है पूरे देश का पीएम है उसकी रिस्पांसिबिलिटी पूरे देश के लिए है ओके तो आप सटायर ऑन राहुल गांधी व्हेन क्यों
क्यों फालतू में क्यों दूं मैं उनको इम्पोर्टेंस? जब पीएम बनेंगे तब पूछूंगी उनसे सवाल, क्योंकि उनसे सवाल पूछने का हक तब होगा और उनको जवाब देने की अकाउंटेबिलिटी उनको तब होगी, अब नहीं है। राइट नाउ ही डजंट नीड टू गिव एनी आंसर टू एनीबॉडी। ओके, आए बड़े रवीश कुमार से सवाल कब पूछे बे? आप ना सही से वो नहीं कर पाते हो। Say something about Ravish Kumar sir. Did you meet him ever? Yes, I have. I have. I was very, very privileged to meet him. In fact, उनकी एक जो मूवी आई है ना, While We Watched, उसकी स्क्रीनिंग हुई थी। उसकी स्क्रीनिंग में द डायरेक्टर हैड इनवाइटेड मी एंड उसमें गए थे, तो रवीश जी से मिले थे एंड रवीश जी सॉ मी, ही शुक माय हैंड एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू सम ऑफ द पीपल एंड ही सेड कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, और मेरे लिए तो हो गया मेरा बस काफ़ी फैन बॉय मोमेंट, फैन गर्ल मोमेंट टाइप का हो गया था। He is a very down to earth person. Ma'am, are you from DU? Yes, I did my bachelor's from DU, but I'm not from DU. Like I don't teach there, but I did my bachelor's from DU. Where does the name Medusa come from? It's a Greek mythological character. It's the name of a gorgon. A gorgon is a kind of a monster. So it there are a number of stories. अभी मैंने शुरुआत में बोला था जब मैं लाइव अपलोड करूंगी ना तब देख लेना। और रुको, somebody gave me money. Anwar Rahman, thank you so much. A small token of respect towards your huge efforts. Love from Saudi Arabia. Thank you. Thank you. अम, अभी आप लोग दे रहे हो ना, ये लोग बोलेंगे पैसा मिल रहा है, जॉर्ज सोरोस का पैसा मिल रहा है। अ, राहुल गांधी पर सटायर करने के लिए बीजेपी इज़ देयर। आई नो राइट? वो तो कर ही रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरा काम थोड़ी ना है। मेरा ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनका वो लगा हुआ है, पूरा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है राहुल गांधी को इर्रेलेवेंट साब्य सा सा शा सा वो क्या कहते हैं? साबित करने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। सो या वो लोग कर रहे हैं अपना काम, मैं क्या करूँ? Okay, that Noida brother said, "Good, no idea." Oh, sorry, I thought your name was Noida brother. He says your name is No Idea brother. No Idea brother has some good understanding. Yeah. Tony Stark, शादी कब कर रही हो? शादी कर ली मैंने, 7 साल हो गए मेरी शादी को। मैम, गोदी पत्रकारों के लिए कुछ कहना है आपको? सो प्लीज से गोदी पत्रकारों के गोद से उतर जाए। अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आपकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, आप अब गोद से उतर के अपने पैरों से खुद चलना सीखे, अपनी आंखों से खुद देखना सीखे और अपनी मुंह से खुद जबान चलाकर बोलना सीखे। यही कहना चाहूंगी मैं गोदी मीडिया को। लव फ्रॉम केरला, लव बैक टू केरला मैन। वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल प्लेस। मेरा भाई खो गया था केरला में एक बचपन में जब वो 2 साल का था, नहीं 1.5 साल का था। Lots of love from Odisha. My lovely sister. Thank you so much, Atal Bihari Patnaik. Is that really your name? Okay. Would you please like to reveal your education? By the way, I watch your every content. Thank you. I did reveal my education. I have a PhD in linguistics. That's my educational qualifications. Thank you very much for watching. Yes, one of the 3 Gorgons, Medusa and her 2 sisters. So Socrates says one of the 3 Gorgons. That is one story. Another story is that she was a devotee of Athena, and then she was cursed by Athena when she was raped by Athena's husband. Um, do you think India needs to do more in integration when it comes to skin color and looks? It is more exposure to your type of facial features, etc. Kila 1234560 ask this question. Um, मोर इंटीग्रेशन मतलब कैसे इंटीग्रेशन कोई कैसे ज़बरदस्ती कोई कैसे करेगा ना? जैसे लोग जाते ही हैं एक दूसरे के स्टेट्स जाते हैं, घूमने जाते हैं और वो करने जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सपोज़र टू माय टाइप ऑफ फेशियल फीचर्स एटसेट्रा। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट जैसा कि मैं बार-बार कहती हूँ ना, बीइंग काइंड। इट्स लाइक कोई कैसा है, कैसा नहीं है, उसका मज़ाक उड़ा के तुमको क्या ही मिल जाएगा? Like just be good, like just be a decent person. Don't make fun of someone or don't be racist and don't have these stereotypes in your brain. Educate yourself, understand. Because again, like कि किसी जैसे मैं कभी मैं होता ना, मैं संगियों से आर्गुमेंट नहीं करती।
ठीक है? या किसी भी तरह नॉट जस्ट संगी, एनी एनी रिलिजियस हार्डलाइनर जो होते हैं, रिलिजियस फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं, किसी भी तरीके के किसी भी रिलिजन के रिलिजियस फंडामेंटलिस्ट से आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो बिकॉज़ उनके दिमाग में सेट है। यू कैनॉट चेंज who they are, you cannot change what they think. This is what I believe in. Okay, so I don't try to. Also because it is this person's responsibility. आप इतने बड़े हो चुके हो यार, आपके पास इतने ये ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए आप ये ओपिनियन अगर फॉर्म कर सकते हो तो उस ओपिनियन के अगेंस्ट जाने के लिए उस ओपिनियन को टटोल के देखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और उस ओपिनियन को एग्जामिन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको सीखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे मैं जब रिजर्वेशन के अगेंस्ट सोचा करती थी ना, व्हेन आई वाज दिस मेरिट बेस्ड पर्सन एंड हार्ड वर्क वाला पर्सन, तो मैंने खुद को एजुकेट किया ना। मैंने अपने आसपास देखा, मैंने देखा कि ये चीजें ऐसी नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, खुद को एजुकेट किया, खुद सुनी लोगों की बातें, खुद लोगों से सवाल जवाब किए, एंड देन यू एंड देन आई स्टिल एम लर्निंग। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो कभी-कभी मैं गलत बोल देती हूँ, गलत सोच लेती हूँ। जब सोच लेती हूँ ना तब खुद को करेक्ट करना पड़ता है कि ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। यू आर थिंकिंग इनकरेक्टली, ये गलत जा रहा है, नहीं होना चाहिए। सो उस तरीके की चीज़ें होती हैं और ऐसा मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। एज़ फार एज़ इंटीग्रेशन दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज़। ओके। मैम जम्मू एंड कश्मीर पर थोड़ी रिसर्च करके प्लीज इस पर एक वीडियो बनाएं। नोबडी इज कवरिंग आवर इश्यूज। आई एम सो सॉरी। अनफॉर्चुनेटली one of the like spokesperson of your community and of your state recently became a Nitish Kumar. पलट गई दूसरे साइड चली गई तो it has been a loss. I'll try to do that. I'll try. Thank you very much for telling me this. I'll try to do that. Okay. Did you really work at Doordarshan? Atul Maurya. No, I did not work at Doordarshan. I just I grew up with it. I grew up watching all those Doordarshan news and ye. Manikanta, Monika, I think it's Monikanto, Homya. Monikanta M. Thank you for educating us. Are you a journalist? No, I'm not. I am not a journalist. I am a teacher. Saurabh Mandal, how to get into some friends who blindly like Modi? What questions to ask? How will their thoughts be changed? Unfortunately, Saurabh ji, their thoughts will not be changed. They will very conveniently change their thoughts when it comes to them. जब उन पे बीतेगी, जब उन पे पड़ेगी तो वो अपना थॉट्स चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन वीडियोस ऑफ ऑल दोस लाइक नंबर ऑफ पीपल जो बुलडोजर जस्टिस को बहुत वो करते हैं और बहुत उन्होंने घूम घूम के बीजेपी के पर्चे बांटे हैं एवरीथिंग। बट उन्हीं का घर बुलडोज हो रहा है और वो रो रो के कह रहे हैं कि हमने इसी दिन के लिए आपको जिताया था, इसी दिन के लिए आपको वोट दिया था। तो उन पे जब बीतेगी ना तब वो ज़रूर बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि देश हित में तुम अपना घर भी नहीं दे सकते क्या? लेकिन जब अपना घर जाता है ना, तब पता चलता है। So, unfortunately, I have lost in this 10 years, I have lost so many friends. So, you will lose friends. It's like there's एक मीम चल रहा था ना कि we can have a difference of opinion, but we can still be friends. Yes, you can have a difference of opinion about what kind of role is your favorite role. अगर तुमको चिकन रोल पसंद है, काठी रोल पसंद है, मटन रोल पसंद है. Not about genocide. ठीक है? Not about lynching. Not about the like blatant discrimination that happens in the country. ठीक है? So you can have a difference of opinion about whether, let's say, reservations are there, are required or not, or should be economic or ye, but you cannot have a difference of opinion about is it okay to kill somebody because they decided or they eat something else or their food habits are different than you. ठीक है? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। ये तो अलग इंसान है। वो फिर अलग इंसान हुआ। ठीक है? सो लूज़ दोज़ फ्रेंड्स। कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। नए नए दोस्त बनाओ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटलिज्म? हाउ इज़ इट अ प्रॉब्लम? शिनयान। नो, नॉट फंडामेंटल इस्लाम, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म किसी भी में रिलिजियस फंडामेंटलिज्म जो होता है, जो ऑर्थोडॉक्सिज्म होता है कि नहीं, हमारा ही रिलिजन बेस्ट है या जो हम सोचते हैं वही सही है। दैट काइंड ऑफ फंडामेंटलिज्म।
Uh, yeah, so that's fundamentalism. वो इजी है और वो कहीं पे भी कोई भी वो कहीं कोई भी हार्डलाइनर बन जाता है as long as you are not troubling other people, you do whatever you want. I am Nasser. Hello ma'am, where are you from? ये सब बता चुकी हूँ मैं, असम से हूँ. AB13. Some of my friends from Bengal are saying that Mamata Banerjee is not democratic. How to convince them that they are wrong? क्या जरूरत है convince करने की? वो वहां पे रह रहे हैं. Maybe they know better than you. उनकी सुनो. क्या तुम बंगाल में रहते हो? नहीं ना. If you are not listen, if you don't live there, if you cannot negate some other person's lived experience. तुम जहाँ रहते हो तुम वहाँ का टेंशन लो. ठीक है. छोटे-मोटे सीएम की कोई औकात नहीं है अभी बड़े वाले के सामने। डेमोक्रेसी में और अनडेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक होने में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, ठीक है? अम, तेरे को देख के मैं पत्थर का बन जाऊँगा क्या? अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है बन जाए क्षितिज तिवारी, हो सकता है बन जाए या पत्थर पड़ जाए शायद तेरे सर पे। ताहुरा ताहुरा Medusa, I'm your big fan. Thank you very much. I love your content. मुझे 3 दिन से खाँसी है सिस्टर प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू? डॉक्टर के पास जाओ, मेरे से क्या पूछ रहे हो? गज़ब है यार। खाँसी है मन की बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा या पासवर्ड दे दो अपना। सॉरी, सॉरी, माय बैड। असम कौन डिस्ट्रिक्ट? हाँ, एड्रेस भी दे दूँ अब? ज़बरदस्ती। Rajni Tiwari, your thoughts on Bharat Ratna for LK Advani? A gross injustice and gross disrespect to the people who have been given the Bharat Ratna before this. Absolutely gross. कोई दोहराई नहीं है और as you can see, I don't mince my words. My opinions are very कोई लेफ्ट राइट नहीं है. सॉरी क्या कहते हैं? कोई ब्लैक व्हाइट नहीं है. सॉरी कोई ग्रे एरिया नहीं है, सब ब्लैक एंड व्हाइट. अ, मोहम्मद यान, मेरी शादी हो चुकी है. हम नामहरम है तुम्हारे लिए. Do you think democracy can be restored? Yes. There is always hope. I don't have it. I don't have that hope, but there is always hope. Uh, okay. अच्छा, AM AB13 तुम लगता है भक्त हो. Some people are saying that Bengal पंचायत polls were not free and fair. देखो हमें पता ही नहीं चला. मोदी की मीडिया मोदिया ने पता ही नहीं चलने दिया बताओ. बात करो, टेल पीपल, है ना? कम से कम पता तो चले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट. अब झारखंड से है असम से, मैं असम से, झारखंड से नहीं. आई विश आई वाज़ फ्रॉम झारखंड though, बट इट्स ब्यूटीफुल से. मैं अपने दोस्त की शादी के लिए गई थी वहाँ पे और हाय हाय क्या खूबसूरत जगह. You cynic, yes I am, very much, unfortunately. This is an undeclared emergency in India. It is. It is definitely undeclared emergency. हिमंतो पे क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं. हिमंतो अपना मुँह जब तक बंद रखे तब तक ठीक है. अच्छा, अच्छा, अच्छा! सेक्युलर डेमोक्रेटिक थैंक यू फॉर टेलिंग मी डॉक्टर मेडुसा ही इज़ ट्रोल. अच्छा समझ गई मैं, ठीक है. नहीं उनकी आवाज़ अब बातों से मुझे समझ में आने लग गया था. वही बात होती है देश की बची हुई है, ठीक है. बंगाल में पंचायत पोल सही से नहीं हुए. अबे यार यूपी में पता भी था. यूपी में पता है क्या हुआ था पंचायत पोल के समय में यार? रहने दो. उसके समय कोविड के समय वो कराया. महिलाएँ जो प्रेग्नेंट थी उनको ड्यूटी लगाई गई, मर गई बेचारियाँ. बोल-बोल के कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या-क्या तो नहीं हुआ है यार, हद रहने दो यार, क्या ही बात। ये तो ऐसा हो जाएगा कि किसी किसी एक का वो कम करने के लिए, किसी एक की के पाप को कम करने के लिए आप दूसरे के पाप को उठा रहे हो। तो ऐसी बात हो जाएगी अगर
एनीवे ये इट्स छोटी-सी इतनी-सी बात नहीं समझ में आती कि अगर कुछ गलत है कहीं तो वो हर जगह गलत है। अगर बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए तो गलत है ये चीज़, बोलो ना यहाँ पे हमको ट्रोल करने के अलावा, बोला करो तुम बनाओ वीडियो यार, अगर मैं नहीं बना रही तुम बनाओ वीडियो कि देखो डॉक्टर मेडुसा नहीं बना रही है बंगाल पे वीडियो। मेरे पास और भी स्टेट्स है और मेरे पास देश है, देश के हालात पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तू बना बंगाल पे, चल, मैं करूँगी तेरे वीडियो को होस्ट एबी 13 चल, काम कर। हाउ लॉन्ग विल दिस गवर्नमेंट लास्ट? अरे भैया 29, 34 सब जगह मिनिमम 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। Do you know about EVM हटाओ आंदोलन शिकिटी? Yes, I have started reading up on it. I have started understanding like मतलब थोड़ा बहुत मैंने करना देखना शुरू किया है कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है. And it's a very big आंदोलन. I just like saw some of the videos. It's huge, like so many people. But again, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि I don't know if it is going to be successful or if it is going to have any kind of ये अ, क्योंकि हाँ, किसान जुड़ जाए तो शायद हो सकता है बिकॉज़ इस देश में किसान एक ओनली कम्युनिटी है, ओनली ग्रुप रहा है, हू हैज़ बीन एबल टू गेट दिस मैन टू टेक समथिंग बैक। किसानों पे ही पूरा मेरा वो है। अगर किसान जॉइन कर जात लेते हैं ना ईवीएम हटाओ वाला आंदोलन, हो सकता है, कुछ हो सकता है। बट अगेन वी नो लॉ चेंज हो चुका है, बहुत सारी वो चीज़ें हो सके बहुत सारी बातें बहुत सारी क्या कहते हैं उसको? वो हो चुका है, चेंजेस हो चुके हैं, ईसी कमिश्नर अपना रखेंगे, सारे वो रखेंगे। अभी तो वो कमिटी वगैरह बनाई नहीं थी जिसमें 4 मेंबर्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट बैलेट वो जो सॉरी ईवीएम बनाने वाली कंपनी के जो कमिटी मेंबर्स थे, 4 ऑफ देम वर प्रीवियसली बीजेपी मेंबर्स। क्या ही हो? Ashish Mishram asks, "What about Hasdev Jungle?" What about it? It is being cut down. It is like there is a huge movement going on of the tribal people and of the people of the area about who are working towards like who are protesting ये सारा चीज बट देन सरकार का तंत्र जो होता है ना सरकार का तंत्र बहुत पावरफुल होता है और उसको बहुत और पावरफुल कर दिया गया है तो कभी जनता जनता है जनता इज पावरफुल बट समय लगता है जनता को उठने में कुंभकर्ण की तरह है समय लगता है जब तक पानी सर के ऊपर से ना हो जाए तब तक उठते नहीं अनफॉर्चुनेट है क्या करें थैंक यू आशीष फॉर योर क्वेश्चन पाप का घड़ा भरने तक समरजीत सेज आई होप सो आई होप पाप का घड़ा भरने वाला हो गले तक तो आ गया पानी प्लीज आस्क इफ एनी पर्सन कैन पुट दिस हैंड ऑन हार्ट एंड से दैट देयर स्टेट इलेक्शंस आर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर एब्सोल्युटली हर दूसरे उसमें से ईवीएम निकल आता है और वो निकल आता है अ, गाड़ियों से ईवीएम निकल आता है। जाने दो। Farmers protest from February 13th onwards for MSP in Delhi NCR like it happened earlier. Okay, okay. I hope they join the ईवीएम वाला thingy also यार। बहुत ताकत मिलेगी उससे। Ma'am, EVM is really a huge problem to counter. Yes, yes. It is. It is a huge problem. Because like I said, anybody with like little bit of investigative skills can just go and watch, go and see how they are manipulated and how. In fact, there is a very good video अभी शायद वायर पे है या किसके चैनल पे है? अभी रिसेंटली है मैंने परंजॉय गुहा ठाकुर है ना? उन्होंने रीट्वीट किया था एक वो मैंने देखा था। It clearly shows how EVMs are manipulated. Harshit Pandey says a few days ago, Javed Akhtar said, "दो नेता, चार इलेक्शन और दो जलसे इस देश की 7,000 साल की हिस्ट्री को इरेज नहीं किया जा सकता." He was talking about Hindu Rashtra. I felt hopeful. What do you think? I am not hopeful at all. नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है. It's about the relationships which have soured. It's about the mentality which has changed. It's about the friendships which have been lost. मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो ऐसी संगी टाइप की बातें करके जिनको मैंने निकाल दिया अपनी लाइफ से, क्या मैं उनसे दोबारा कभी बात कर पाऊँगी? ना, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो।
जिस वक़्त और मैं मेरे पास और मैं हम लोग मतलब एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो लोग इस प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। जैसे फॉर मी, मैं एज़ अ हिंदू, मेरे पास वो प्रिविलेज है कि मैं ये सब चीज़ें बोल सकूँ और बोल के रिलेटिवली रिलेटिवली मैं सेफ रह सकूँ। You see the kind of threats that Zubair has to go through? Zubair के साथ उनका जो co-founder है प्रतीक सिन्हा, both of them work together, both of them are doing the same thing. But Pratik doesn't get so many threats. Why? ये प्रिविलेज अगर आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हो, नहीं हम तो एपॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, तू मेडुसा तू हमेशा पॉलिटिक्स की बात करती है, हम नहीं कर सकते, ये माहौल खराब हो जाता है। नो, आई डोंट वांट टू बी इन दैट माहौल वेयर 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 आपके वही वही बात है ना, आपके बगल के घर कमरे में आग लगी हुई है और इस कमरे में आप डिनर टेबल पे हाँ, मौसम बहुत अच्छा है टाइप की बात करो। आई आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। सो ये जो लॉस हुआ है ना, ये ज़्यादा बड़ा लॉस है। हाँ। Rajni Tiwari asks, "Ma'am, do you think UCC will come before or after elections?" UCC is not going to come. और UCC अगर होगा आएगा भी ना तो UCC सही मायनों में UCC नहीं होगा. Because there is no way. Our country is a country of like different languages, different religions, different practices, different matrimonial practices, different so many different things. Like ये हो ही नहीं सकता homogeneity ला ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते. The only reason why they might introduce the UCC is to target only one community, which is the Muslim community of this country. उनके उनको टारगेट करना होगा तो लाइक और सिर्फ उन्हीं because for example remember when last time when the UCC conversation started happening they were like tribal people will not fall under the UCC. The moment you remove one particular group from the UCC, how is it a uniform civil code? It's not uniform at all. You have left out one country. You have left out one community. फिर नहीं होगा तो सोचो कुछ नहीं होगा नहीं होगा so and if it comes it is not going to be the UCC, it's going to be completely something else. um didn't India already have religious tensions? Yes, we did. We already did. We already did लेकिन religious tensions के ऊपर भी एक चीज़ होती थी ना पहले वो होता था नॉर्मल डिसेंसी, नॉर्मल पोलाइटनेस, नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी एक था। पहले आपकी पहले आपका रिलिजियस प्रॉब्लम क्या होता था कि नहीं-नहीं अगर बेटी को मुसलमान से प्यार हो गया, बेटे को मुसलमान से प्यार हो गया, तो जो वो होता था मुझे लगता है कि देन दैट इज़ द लेवल ऑफ रिलिजियस डिसहार्मनी दैट यूज्ड टू बी देयर। अब क्या हो गया है कि पास कि आपको अपना त्योहार मनाना है तो किसी और के इबादतगाह के सामने जाके आपको डांस करके मनाना है, ठीक है? किसी आपको अपना मतलब आप यू आर नॉट हैप्पी with what you have. You have to make somebody else miserable. That is a problem. If your happiness, if your victory, if your खुशी comes from the tears of someone else, Schadenfreude जिसको बोलते हैं, Schadenfreude, German word, that's problematic, no? टेंशन्स तो पहले भी थे, क्यों नहीं थे यार? क्या देश में रायट्स नहीं हुए पहले? बिल्कुल हुए हैं, एब्सोल्यूटली हुए हैं, है ना? बट ये डेली का एक माहौल कि आज कहाँ से खबर आएगी? तो मेरा तो एज़ अ हिंदू आई डोंट हैव टू एट लीस्ट बी अफ्रेड ऑफ दैट। आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड अफ्रेड कि मैं अगर मान लो कहीं जा रही हूँ तो ऐसे नमस्ते करके अपने ईश्वर को याद करूँ। आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दैट कि मेरे को कोई कुछ कह देगा, है ना? आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि अगर मैंने सर पे मफलर लगाया है, नहीं लगाया है, बाल ढके हैं, नहीं ढके हैं। आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि मेरे को कुछ कहे। मैं कुछ कह लेती हूँ ऑन स्क्रीन आके किसी को कुछ बोल देती हूँ। हाँ, बिल्कुल डर तो लगता ही है, हमेशा डर लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत एक बॉर्डर है, थोड़ा बहुत एक एक प्रिविलेज है। सो या डू यू थिंक एक सेकंड ज़ुबैर का नाम किसी ने लिया था। इफ ही हैज़ अ लेफ्ट एजेंडा वेट वेयर इज़ द क्वेश्चन?
What is can you okay, before if I missed that question, but yeah, Kaleem said का question मैं ले लेती हूँ. Can you recommend the top three YouTubers for learning about unbiased current affairs? Meghnath, number one. Yes. Then you have unbiased. Unbiased तो अगर देखो आपको तो लगने because for example I have a bias that I am against the BJP. So that is my bias. तो मुझे भी वैसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं, वैसे ही कंटेंट अच्छा लगता है. न्यूज़ वगैरह के लिए ऑफ कोर्स रवीश जी है, अभिशार है एंड ऑल ऑफ दीस पीपल आर देयर. Um, where did that question go? And then you have the top 5 गोदी बोल के एक चैनल है, वो करता है बहुत, वो है. Oh, then you also have अरे यार, I'm forgetting. Let me think of it. Let me remember, and then I'll make a post about it and I'll put it up on the ये हाँ, मैं वो पोस्ट कर दूंगी. I'll remember that. Narendra TV, do you still think of Rahul as a competitive face of the opposition? Yes, absolutely, I do. I think he has mm, क्या कहते हैं उसको bettered his image. He has come a long way. He has understood a lot of things. और मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो सही कह भी रहे हैं. For example, his take on the caste census and and ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं वो जो सही कह रहे हैं. But the problem which I have felt with Congress, and I have said it in other platforms also, the problem I have felt with them is that these good ideas which their leader is having, that is not percolating down into their cadre. जो ज़मीन पे कार्य करता है, वहाँ तक वो पर्कोलेट करके नहीं आ रहा है ना? तो वो प्रॉब्लम है. As long as the cadre, as long as every single soldier, foot soldier of Congress does not believe what you are saying, it's not going to work. Every single foot soldier of BJP believes in the idea of Hindu Rashtra, believes in ये. Even if it is even if it's an association which has come out of opportunity, अपॉर्चुनिस्टिकली भी अगर वो कर रहा है ना, उसको लग रहा है, उसको लगता है कि उसका फ़ायदा ही होगा. He believes in that. So every single individual, every single कार्यकर्ता of the Congress has to believe in Rahul Gandhi's vision for the country, and only then he is going to make any kind of change. वरना वो तो करते रहेंगे यात्रा. अगर ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता वही काम कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता बागेश्वर के साथ घूम रहे हैं, उनकी पोस्टरें लगा रहे हैं, it's not going to change. Executioner has thank you so much, has bought a super thanks. Pankaj has given me something. Thank you. Thank you very much. Okay, just let me quickly look at some of the people who have bought super thanks and stuff so that I can thank them. Thank you, Pankaj, very much. Pankaj, is this Pankaj? Who's this? Pankaj Kandu? Are you my friend, Pankaj? Tell me who you are. I haven't heard from you in such a long time, but thank you. Executioner, I don't can't see your full name, but thank you. I can just see that it's there. Hasdev Jungle, I have understood. Gaurav Kapahi, again, I have. I believe there will be no elections in India after 2024. I am with you, bro. We are of the same opinion. Gaurav Kapai, we are of the same opinion. Yes. Asha Chandran, thank you so much, Asha ji. Thank you very much. Yazdi Tantra has become a member. Yay! Welcome, welcome, and thank you. Club Prasenjit, thank you very much for your support. Atul Moria, thank you very much. Being Ilyas, thank you very much. No idea, brother, thank you very much. Pawan Kumar, for your information, I've never made any contributions in my life. Thank you. However, I'm determined to make a contribution for your benefit. Thank you very much. Okay. I think this is it. Okay. All right. Let's go back to live chat. Where is live chat? Live chat. Okay. Opinion about Dhruv Rathi. I think Dhruv Rathi is extremely intelligent. His team is extremely astute. They work very hard and very well. His videos are impeccable. He is problematic, and
in a number of occasions I've seen that myself. But I but because of the educational value of his work, I cannot really write him off. And again, he is one of the reasons why I started doing this in the first place. When I was looking at his videos, I'm like, hey, ये तो गलत बात है, मुझे बोलना चाहिए. Anyway, so yeah. Uh, oh, sorry, I should do top chat because there are problematic chats in this also, like गाली गलौज वाले. मुझको दिख रहे थे. अच्छा हुआ मैंने बंद कर दिया. Nikhil, thank you so much. How much safe do you feel as a woman in India? I don't feel safe, bro. And I know taekwondo, for God's sake. As a woman in India, no, I don't feel safe. I don't feel safe. Also, I live in UP. And plus somebody like me जो मतलब मुफ्फट है और कोई देख रहा होगा, स्टेयर कर रहा होगा या पिंच करके जाएगा तो लड़ने लग जाऊँगी तो फिर उसके बाद तो मौत तय है मेरी. Anyway. It requires guts to ask questions to powerful leader. Majority people so appreciate your work. Thank you very much. Thank you. I'll not read the whole thing because again, like I said, मुझे तारीफ पढ़ने में अपना थोड़ा सा वो लगता है. Best leader in BJP? No one. uh, Give us some good book recommendations. I'm currently reading this book called How Democracies Die. I forgot the name of the author. Sorry. Then you have Akar Patel's book. I read that also. अभी आकार पटेल का एक वो है. Mm, Again, remind me. I will create a post for book recommendations and put it on the post on the YouTube community page. ठीक है? क्योंकि ऐसे अचानक से कोई पूछता ना तो दिमाग में से ऐसे क्योंकि मेरा क्या है ना मैं मेजरली फिक्शन पढ़ती हूँ और मेजर और नॉन फिक्शन भी वो मैंने लास्ट 2 साल में 3 साल में पढ़ना शुरू किया है. तो मेजरली मैं फिक्शन पढ़ती हूँ और ये क्या पढ़ती हूँ मैं? सीरियल किलर वाले ट्रू क्राइम नॉवेल्स. आई नो. अम, और कौन है? Why don't you take on our Himonto? My parents live in Assam. He'll come again like with a bulldozer and give तोड़ो my house. मेरे साथ कुछ भी करे, मेरे मम्मी पापा के साथ करेंगे तो बेचारे बुरा लगेगा ना मुझे. Dr. Purnur Kaur has become a member. Thank you. Thank you, Purnur ji. Uh, what was your view on Modi and BJP when they came to power in 2014, and what is your view now? My views about them have worsened because I did not like them पहले और आज तो और भी ज़्यादा I detest them now. And 2014 में पावर में आने की मतलब समय नहीं लगना चाहिए ना सोचने के लिए 2002 से ओपिनियन बना हुआ है. 2002 से ओपिनियन बना हुआ है. तो 2014 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है. 2002 तो हमने देखा ना आई वाज़ इन क्लास 10th. वो सारी चीज़ें उस टाइम पे जब मीडिया अपना काम करती थी. तब के उस समय का इंडिया टुडे का एक एडिशन आया था वो मुझे आज तक याद है वो जो बंदा जो ऐसे हाथ ऊपर करके द फोटोग्राफ व्हिच बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर जिसके यहाँ पे माथे में वो बंधा हुआ था और वो था तो वो वाला चीज जो है ना वो वाला बंदा जो है वो वाली फोटो अब आज तक मुझे याद है तो and there was an interview about there was an interview done with the same person as well वो आज भी वही काम करते हैं वो पहले भी जूता बनाते थे आज भी वो जूता ही बनाते हैं उस प्रोग्राम के बाद भी उन रायट्स के बाद भी कोई बदलाव आया नहीं उनके जीवन में बदलाव मेरी ओपिनियन में मेरी सोच में भी कोई बदलाव इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू दिस कंट्री एनी थॉट्स ऑन प्रशांत किशोर तथागत मानुस इज आस्किंग मी he has his bright days he has his like again like I said कि आपको सुनना सबको है आप अपना ओपिनियन क्रिएट कीजिए अपना ओपिनियन और मैं कौन होती हूँ प्रशांत किशोर पे बोलने वाली यार एकदम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एनालिस्ट है देश का पूरा इलेक्शन देख रहा है पूरा वो कर रहा है उनकी वो दूसरे लेवल पे है एज अ छोटा मोटा person who creates content and who's talking to you guys right now uh, there is a lot to learn from these people आप सीखें अपने ओपिनियंस क्रिएट करें अपना ओपिनियन बनाएं बेशक
और आप जितना पढ़ेंगे और जितना सुनेंगे ना अलग-अलग तरीके के लोगों को, आपको सबकी बातों में होल्स और गैप्स नज़र आएँगे। और वो होल्स और गैप्स को आइडेंटिफ़ाई जब आप करने लगेंगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एनीवे, सो इफ आई डोंट हैव एनी मोर मैम, कल मैंने हेमंत सोरेन को विवादित बयान पर सुधीर चौधरी को अरेस्ट करने के लिए इंस्टा पर स्टोरी शेयर की एंड आफ्टर दैट सम ऑफ माय ब्राह्मण फ्रेंड्स अनफॉलोड मी। कुछ इस पर भी बोले, इस पे मैं क्या बोलूँ? तुम्हारे ब्राह्मण फ्रेंड्स ने तुम्हें अनफॉलो किया, तुम जाके उनको पूछो ना कि क्यों अनफॉलो किया? अगर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो लोग तो कन्वर्सेशन करेंगे और अगर नहीं करना चाहेंगे तो भाड़ में जाइए लोग यार। जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो। जा रहे हैं, जाने दो। ऐसे लोगों को आप रोक नहीं सकते और ना रहें ऐसे लोग बेटर है। श्रीनगर बॉय, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू ऑनलाइन, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू वेदांत, थैंक यू। Dr. Mohibul, thank you very much for your contribution. Any views on former PM Atal Bihari Vajpayee? ABV? अटल बिहारी वाजपेयी? ओह! अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदुत्व को या उनके सॉफ्ट ब्रांड ऑफ हिंदुत्व को हम लोगों ने जगह दी, इसीलिए मोदी आगे आ पाए। बट ही वाज़ at least a statesman and at least he had the guts to talk about or say things like कि ये गलत हुआ या ये but again he was the one who said जमीन को समतल करना पड़ेगा तो I don't really give him points for that. No. कविताएं अच्छी लिखा करते थे वही करते तो बढ़िया होता. Your English word series is beautiful. Thank you. आई थिंक क्वेश्चंस अभी थोड़ा-सा रिपीट हो रहे हैं, इनके बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए। तो मे बी वी कैन कॉल इट अ डे टुडे। हुँ? हाय 1 घंटा 45 मिनट, इतनी देर से बोल वैसे पता नहीं चलता बिकॉज़ यू नो आई एम अ टीचर, आई एम यूज्ड टू टेकिंग 2 घंटे का क्लासेस। 1 घंटा, 2 घंटे का क्लास तो आराम से हो जाता है। केवी ने केवी सीआरपीएफ, नो केवी, केवी, no মই কষ্ট বুঢ়া গোহাঁই। এই কেভি পিছৰ লেটাৰটো কৈ দিলেতো গম পাই যাবা ক'ত। গুৱাহাটীত নহয় কিন্তু। I am not from Guwahati. अ, शशांक शेखर जी, मैं बता चुकी हूँ, आप अगर लेट आए हैं उसमें मैं मेरी शादी हो चुकी है। अ, do you think about what do you think about the 2026 de-elimination process? Do you think BJP will utilize this opportunity to increase seats in North, especially in UP, as it is their stronghold? हाँ, बिल्कुल, आराम से। अरे भैया, यूपी में सारी सीटें हैं उनकी। कुछ कुछ किसी को नहीं आने। अब की बार 400 पार। मान के चल लो। मान के चलोगे तब बढ़िया लगेगा, बढ़िया बढ़िया रहेगा। Are you MBBS? No, I'm PhD. Shaikh Khan. फ्री एडवाइस टू अंधभक्त एंड गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को क्या ही एडवाइस, अंधभक्त अंधभक्त को तो यार अब जब वो अंधभक्त बन गया है तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। लाइक आई सेड, आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो जो ये करते हैं ना रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, यू कांट आर्ग्यू विद, देयर इज नो वे। लर्न फ्रॉम सिखिज्म, ग्रेट हिस्ट्री टू फाइट आरएसएस, सिमरनजीत सिंह फॉर ये एब्सोल्युटली agree. Sikhism is it's a wonderful, wonderful, uh, in fact, in wonderful religion. In fact, जो हमारे जो धर्म है ना, all of them say such beautiful things and such, you know, positive things about how to live your life, how to live community life, how to live, you know, how to do better in this world, how to have a better connection with the Almighty. और उन सब चीजों को छोड़ के किस में लगे हुए हैं? हैं? कौन सी चीजों में लगे हुए हैं? My God. रहने दो। Anyway, so yes, there is a lot to learn from Sikhism, and thank you Simranjeet Singh for pointing that out. If you can make videos or share videos with the community, with the group that is here about where and how to do it, go ahead and share in the chat box. Nikhil asks, do you know why Bilkis Bano happens? The roots goes back to Savarkar given an advice to use rape as a political weapon.
No, it just does not go back to that. Rape as a political weapon. Oh, I said that. I hope the thingy doesn't get like closed or some strike doesn't happen. Anyway, that as a political weapon has been used, or that as a weapon of war has been used since time immemorial. कहीं भी war होता है, किसी भी तरीके का war होता है. Women and children are subjected to the worst possible violence that there is. And it, in fact, goes back to patriarchy, which sees women as property, which sees women as objects to conquer. So, because of that reason, वो तो घुसा हुआ है मर्द के ब्रेन में पितृसत्ता उसी की वजह से होता है। इसीलिए तो आप कभी सोचना ना हमारे तो गालियों को देखो ना द जिससे जिस जिन शब्दों से आप किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो वो शब्द भी आपकी महिलाओं से रिलेटेड है आपके परिवार की महिलाओं से रिलेटेड आपकी माँ से आपकी बहन से रिलेटेड so even our verbal violence involves women involves violence against a woman an imaginary form of violence against women so it's not just गोलवलकर सावरकर ने तो बस उस आइडिया को टैप किया है ना उस आइडिया को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है तो बहुत पहले से वेदांत कुमार गुड टू सी ऑनलाइन आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क थैंक यू वेदांत what is the agenda of bjp it's capturing the power and money and then remain in power always yes you have hit the nail on the head aditya it is rishikesh lecture says the education system is in shambles what can we do to resist this systematic demolition ब्रो ये तो मतलब वीडियो बन जाएगा पूरा इसमें सोचने में इनफैक्ट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट the education system and the things happening in it with my friend वो क्या है ना जैसे हम लोग सरकारी जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स को हम लोग फंड नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सर उन्हीं को कोई भी बच्चा सर कोई भी किसी को आप सरकारी स्कूल में नहीं भेजोगे। फिर आप क्या करोगे सरकारी स्कूल बंद कर दोगे और प्राइवेट कर दोगे, फिर वो पैसा वो प्राइवेट में वो कर दोगे, प्राइवेट में बच्चा ज़्यादा पैसा देके चला वो करने लगेगा। उससे होगा क्या एक बड़ा तबका जिसके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, उसके पास एजुकेशन का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। वो पीछे रह जाएगा। वो डिप्राइव्ड रह जाएगा, उसके लिए जितने भी दूसरे एवेन्यूज़ हो सकते थे, एजुकेशन से जो जो एवेन्यूज़ खुल सकते थे, वो एवेन्यूज़ बंद हो जाएँगे एंड एन अ ह्यूज जनरेशन, अ ह्यूज चंक ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव no education, will have no chance of, developing themselves or bettering themselves in their lives. तो ये तो you are crippling it for generations. This is crippling. We were talking about how it was the education system is being crippled. On how to change it or how to ये पता नहीं यार तुमको like if you get to know something if you have an idea or if you can write something जिस पे हम लोग बात कर सके I would love to create a video and make a video with it uh, I'd love to do it. You can email me something at Dukh Darshan TV, DUKH, Dukh Darshan, DARSHAN TV at gmail.com. Okay? Let's see. कोशिश करते हैं. अपने दिमाग में तो और इनफैक्ट अभी तो और भी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में. Dr. Purnur says linguistic insights on cuss words seems interesting topic to understand. Yeah, it is. It's a very interesting topic actually. Uh, Pednekar Sukumar. Thank you, Pednekar, for your contribution. Uh, Shashank. Shashank, no. Be happy. अब की बार 400 पार. बिल्कुल अब की बार 400 पार. You point out the mistakes of BJP, which is a good thing. I hope you will also point out the mistakes of Congress when their government comes to power. Absolutely. I've been doing that पहले also. लेकिन पता है क्या होता है? सोशल मीडिया अब आई है ना तो अब लोगों को पता चलने लगा है देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज आस्क्ड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन जेएनयू from NSY. NSY is the Congress Students Party, National Students Organization, National Student Union of India. And I am from Assam, and Assam में कांग्रेस की सरकार थी for 3 consecutive terms. ठीक है 3 or 4 consecutive terms.
और इमेजिन लाइक 15 साल, 20 साल आपकी एक सरकार रही है एंड द थिंग्स दैट अ पावरफुल गवर्नमेंट कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ स्टेट आर इनॉर्मस, इनॉर्मस, ठीक है? अगर कोई चाहे तो, जो करना चाहे। व्हाट डिड दे डू? दे कंप्लीटली बैंकरप्टेड माय स्टेट, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। इमिग्रेशन के इश्यूज इतने ज्यादा हैं और इमिग्रेशन जो होता है उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनका भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको भी आप सेटल नहीं कर पा रहे हो, आप बॉर्डर भी क्लोज नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है? तो आई सेड टू द पर्सन हु हैड अप्रोच्ड मी कि आप खड़ी हो जाइए हमारी तरफ से, हमारे पार्टी में जिस द पार्टी जिसने मेरे स्टेट को खोखला कर दिया, मैं कैसे उसके उससे खड़ी हो जाऊँ? तो मैं दिस इज़ समथिंग व्हिच आई से अमंग माय फ्रेंड्स आल्सो, लाइक दिस इज़ अ रनिंग जोक दैट कितनी बुरी हो सकती है बीजेपी कि कांग्रेस की सरकार अच्छी लगने लग जाए। ये लोगों को लगने लग जाए कि अब तो कांग्रेस की सरकार आ जाए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सो या आई विल कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज़ ये ज़बान बंद नहीं होती है, तो यही तो प्रॉब्लम है। नो आइडिया ब्रदर सेज अब की बार डेमोक्रेटिक सरकार। आई होप यू आर राइट। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव दिस होप। आई डोंट हैव इट। नफ़रत का नशा उतारने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नफ़रत का नशा उतारने में टाइम लगेगा, जेनरेशंस लग जाएँगे भैया। ये जो ज़हर अंदर तक घुसा दिया है ना, जेनरेशंस लग जाएँगे। ये जो नहीं बोल सकते, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये जो आइडिया है ना। Do you think our public servants, mostly IPS, IAS, are responsible for this ongoing democratic issues and other issues? No. वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो उनको जो ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर का पालन करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है उनको जैसे द वर्स्ट पॉसिबल थिंग इज जो जो sometimes they have to take very like difficult decisions. They can't do anything. सब जो करना चाहिए वो तो ट्रांसफर हो जाता है। उसको कहीं और भी संजीव भट्ट को आज तक नहीं निकाला है जेल से, है ना? There are IPS officers who have had to resign. IPS officers and IS officers who have had to resign because they have refused to bow down to the government. है ना? So it's not their fault. ओके, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। बहुत आप लोग दोबारा से देख लेना, ठीक है? और 2 घंटे भी हो गया है, मेरा मुँह दर्द कर गया, अब दर्द कर गया बोलते-बोलते। बट थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड लेट्स डू दिस अगेन। बुरा नहीं था, है ना? क्योंकि मैंने टॉप चैट कर रखा था ना, तो वो गाली-गलौज वाले वो गायब थे। मज़ा आया। क्योंकि एक होता है ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इंसान को तो आप कोई गाली-गलौज दे रहा है तो बुरा तो लगता ही है ना, कितना भी आपकी चमड़ी मैं असम से हूँ तो मेरी चमड़ी उनकी जैसी है ना या राइनोसेरस वाली है, गैंडे वाली चमड़ी है कि नहीं लगती चीज़ें। लेकिन कितना भी हो, लगता तो है ना बुरा, है ना? तो अच्छा हुआ नहीं किया था वो, अच्छा वो गायब थे। यस! 1-2 ट्रोल थे नहीं, नहीं, ट्रोल्स का दिमाग ही एकदम वो रहता है। इतने तो बादाम जितना तो दिमाग होता है उनका, उसमें और कुछ नहीं दिखता उनको। अरे! मुसलमान ये करता है तो हम लोग क्यों नहीं करें? अरे भैया तुमको अगर बुरा लगता है मुसलमान करता है तो तुमको क्यों करना है वो चीज़ यार? ये तो सोचो। तुम पे एक तरफ बोल रहे हो वो करता है हमको या फिर जेलसी होती है कि वो करता है और तुम नहीं कर पाते। व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ इट? व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ योर प्रॉब्लम? ठीक? यहाँ पे बंगाल में ऐसा हो रहा था, पंजाब में ऐसा हो रहा था। अरे भैया पूरे देश में भी हो रहा है तो वो तो देख। देख तो आँखें खोल के तो देख तू। नहीं, बादाम बड़ा बोल दिया आपने। नहीं, मैं अखरोट बोलने जा रही थी लेकिन मेरे मुँह में बादाम आ गया। एनीवे, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी लेट्स डू दिस अगेन हो सकता है सैटरडे को करें अगर सैटरडे को अगले सैटरडे को करते हैं। अगला फिर अगले दिन संडे होगा तो मैं आराम से रात को लेट होके सो के भी उठ पाऊँगा ना। और तब तक मैं थोड़ा-सा फिगर आउट भी कर लूँगा या मेघनाथ से वो लेकर क्या कहते हैं उसको?
लेसन्स लेकर कि और एक काम करते हैं, एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? उस वो टॉपिक के ऊपर बात किया करेंगे फिर। वो उसमें मुझे लगता है थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग भी होगा और देन आई विल आल्सो बी एबल टू टेक योर कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक? ओके? लेट्स डू दिस अगेन। नेक्स्ट सैटरडे आई विल ट्राई नेक्स्ट सैटरडे अगर नहीं होगा तो फिर 15 डेज़ में एक बार करेंगे। जीडी, थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक दैट्स गोना बी द फर्स्ट it's your first super and that's going to be the last thing for today. Maje hi maje. Okay, bye guys. I don't know how to end this now. Okay, there is one button which says end stream. Okay, bye.